about provision for doubtful debts also. I explained it completely. Now, what is that we will be doing ahead now is we will be going ahead with the illustration number 7. Very quickly, I don't want any disturbances. I will take all your doubts at the end of 1 hour of class. Now, please concentrate. Right? So, the first thing that we are going to go ahead and see is the balance sheet of Tapar as on 1st of April 2021 was as follows. They have given you the opening balance sheet. इसका मतलब है opening balance sheet में assets और liabilities का details आपको दिया गया है. Now please come down. During the year 2021, his profit and loss account revealed a net profit. तो profit and loss account का भी information दिया है. So after preparing the profit and loss account, net profit आ गया है 18,30,000. Okay, this was after the following. So इसको they have compared these three things. The first thing is rent received from property that is let out. तो आपको rent receive हुआ है 3 lakhs. B, depreciation on plant and machinery है 10%. Furniture and fixtures है 5%. Okay, ठीक है. And the last one is provision for doubtful debts. 5% of the trade receivables. Okay. Madam, ये वाला information क्यों दिया है? They have given you this information stating that वो P&L account को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है एंड उसका नेट प्रॉफिट वाला फिगर 18,30,000 है. तो ये दोनों these two adjustments are very important for you, my dear students, क्योंकि you have depreciation on plant and machinery. आप क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी को कंप्यूट करने के लिए यू शुड टेक दिस प्लांट मशीनरी का वैल्यू एंड अप्लाई 10%, बिकॉज आपको इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू फ्रॉम वेयर विल यू टेक? ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस इज देयर विथ मी मैडम. उसमें मैं डिप्रिसिएशन का रेट को आई विल बी एंटरिंग इट. क्लियर? एंड व्हाट इज द सेकेंड वन मैडम? हियर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सन्ड्री डेटार्स में जो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए एडजस्टमेंट देता है, यू हैव टू कंप्यूट द प्रोविजन और उसको भी आप रिड्यूस कर देना चाहिए. एंड नाउ कम अ लिटिल डाउन. क्या what is that they are telling us? Very, very important. But while preparing the P&L account, he had forgotten. Forgotten का मतलब है वो भूल गया है. तो क्या भूल गया है? एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 का भूल गया है और दो है प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. इसके बाद करंट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है और ड्रॉइंग्स का इंफॉर्मेशन भी दिया गया है. Now, how are you supposed to do this question? My dear students, in this question, they are asking you to prepare only the closing balance sheet. So you will be writing in the books of Thapar, balance sheet as at 31st March 2022. तो आपको बस ये वाला प्रिपेयर करना है. बट प्रिपेयर करने के पहले आपको ये वाला इंफॉर्मेशन भी है. आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आप मिला है, इज दैट करेक्ट? नो, द प्रॉफिट दैट यू हैव गिवन और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट. उसने तो दो एडजस्टमेंट्स को भूल गया है. तो अभी हम क्या करना है? यू विल बी प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड एज द एडजस्टेड P&L अकाउंट. ये एडजस्टेड P&L अकाउंट क्या है मैडम? आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ P&L. I have got the profit value. कितना है net profit? 18,30,000. But madam, I forgot two things to be mentioned. वो दोनों क्या है? First one है outstanding expenses. You people tell me, हम outstanding expenses को which side लिखना है? Which side are we going to write outstanding expenses? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों को भूल गया है. सो विच साइड इन द P&L अकाउंट शुड वी राइट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? माय डियर स्टूडेंट्स, the outstanding expenses will come onto the debit side. Very good, madam, but we don't know what is the expense. No madam, no problem. तभी सैलरी है, उसमें आउटस्टैंडिंग है. व्हाट वी विल डू? सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो इसका मतलब है वी एड इट विद द एक्सपेंस. करेक्ट? सो यू शुड राइट इट ऑन द डेबिट साइड बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द ईयर. So you have to write that and you have to show here. कितना है outstanding expenses? 1,80,000 भूल गया है.
तो whatever I forgot outstanding expenses same like expense because they pertain to the current period तो मैंने डेबिट किया है. और दूसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस किस तरफ आएगा? विच साइड विल द प्रीपेड इंश्योरेंस कम? प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर को अभी पे कर देते हैं हम. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ वी विल राइट लाइक दिस. सपोज इंश्योरेंस का वैल्यू आपको पता है, माइनस प्रीपेड करते हैं. करेक्ट? एवरीबडी प्लीज सी हियर. हम डेबिट साइड में प्रीपेड को माइनस करके लिखते हैं. करेक्ट? बट अभी आपको ये इंश्योरेंस का इंफॉर्मेशन है नहीं है, ओनली प्रीपेड का इंफॉर्मेशन है, तो वो माइनस में आ जाएगा. डेबिट साइड पे माइनस, यानी आप इसको इस तरफ शिफ्ट करने चाहिए. इफ यू डू दिस प्रीपेड इंश्योरेंस शिफ्टिंग दिस साइड, बस हो गया है. वाई मैडम प्रीपेड आई एम शोइंग इन द क्रेडिट साइड? प्लीज अंडरस्टैंड, प्रीपेड एक्सपेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. टोटल एक्सपेंस से प्रीपेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज वो इस ईयर का एक्सपेंस है नहीं, अगला ईयर का एक्सपेंस. आई एम पेइंग इट नाउ. सो एनीथिंग विच इज प्रीपेड इन नेचर फ्रॉम द एक्सपेंस वी विल सब्ट्रैक्ट इट. और रादर व्हाट यू कैन डू, यू कैन पोस्ट इट ऑन द क्रेडिट साइड. तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है. Okay, profit will not come in the debit side. Sai Pranavi, profit already 18,30,000 balancing figure is there. Now this profit will have a credit balance. Abhi hum us profit mein we are doing adjustments. So I should bring the net profit in the adjusted P&L to the credit side. Gross profit P&L account में किस side लेके आते हो? Gross profit को trading account से P&L account को किस साइड में लेके आते हो? You will bring it to the credit side. The same way, already you have a net profit. Now you have to correct the net profit in adjusted P&L. This net profit will come on to the credit side. Is this clear, everybody? Can somebody tell me the answer? 18,50,000. The corrected P&L or the corrected or revised profit is nothing but revised net profit is how much? Anybody? 18 lakh and 15,000. Shivani? Okay. 16 lakh and 70,000, madam. So this is the net profit revised. क्यों आपने रिवाइज किया है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंस को भूल गया है, तो अभी वी आर प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड और रिवाइज्ड P&L. उसमें से वी आर गेटिंग 16 lakh and 70. Now let us please go to the particular balance sheet preparation. Very, very simple, very, very easy. Everybody with me? The first thing is in assets. I will be going and I will be writing machinery. Correct? What is the first asset? Plant and machinery. Plant and machinery का value था 30 lakhs minus कितना है depreciation? Depreciation on plant and machinery is 10%. So 30 lakh में 10% को apply करने से 3 lakhs आएगा. So 27 lakhs है net value. मैडम वेयर डिड यू गेट 30 lakhs? क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है. मैडम वेयर डिड यू गेट द 10%? ये है आपके एडजस्टमेंट्स में. ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट्स इज ऑलरेडी बीइंग डन, सो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं ये वाला प्रिपरेशन में. जो हम भूल गए हैं एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं. अदरवाइज दिस इज हाउ वी विल डू. एवरीबडी क्लियर और यू पीपल हैव एनी डाउट्स? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सभी देखो. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर का वैल्यू है 3 lakhs, उसमें 5% का डिप्रिसिएशन है. 10% इज 30 lakhs, 5% इज 15,000. तो ये आएगा 2,85,000 का. एवरीबडी विथ मी? आर यू ऑल फॉलोइंग? वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग मोर नथिंग लेस. Okay, that's good. After the furniture, what is the next item? The next item is trade receivables. यहाँ पे you need to be very very careful. Trade receivables का value, you will tell me, madam opening balance sheet में कुछ है madam. Okay, Akshat Jain, I'll do that. Please now listen here. Trade receivables का कुछ value है 14 lakhs का. But now coming back, my dear students, you should follow this particular thing. Whenever the current assets value is given to us separately, ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट से हम ये दोनों फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू लेते हैं, बट करंट असेट्स का वैल्यू यू शुड नॉट सी द ओपनिंग बैलेंस शीट, बट यू शुड सी व्हाट, यू शुड सी हियर. वो करंट असेट्स था इतना.
Clear everybody? Now inventories है 14,50,000, trade receivables है 20 lakhs. इस 20 lakhs में provision का value कितना है? 1%, 5, sorry. हाँ, इसमें से 5% है. So I will be putting that 5% here. तो 20 lakhs में 5% होता है 1 lakh. इसको मैं subtract करके यहाँ 19 lakhs लिख देती हूँ. Trade receivables is clear? Yes, you can do that, Aditya. And the next one is cash and inventories. So cash and inventories कितना है everybody? The inventories are 14 lakh and 50,000, and then cash at bank or cash in hand is 10 lakh and 35,000. क्लियर है एवरीबॉडी? बट अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, वो भी आता है आपका करंट असेट्स में. तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 20,000. इट कम्स टू द बैलेंस शीट. ओवर. अभी आ जाओ लाइबिलिटीज के साइड पे. लाइबिलिटीज के साइड पे अभी ट्रेड पेएबल्स हम फटाफट वी कैन राइट इट हियर. करेक्ट. ट्रेड पेएबल्स का इंफॉर्मेशन दिया है 11 लाख एंड 40,000 क्वेश्चन पे हो गया. और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसको भी मैं अभी यहाँ पे लेके आके 1,80,000 में लिखती हूँ. बट अभी कैपिटल का कैलकुलेशन करनी चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट में? कैपिटल माय डियर स्टूडेंट्स, द ओपनिंग कैपिटल इज 50 lakhs इन द बैलेंस शीट. ओके, ये है 50 lakhs इन द बैलेंस शीट. अभी इस 50 lakhs से हम क्या ऐड करना है? नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, वो है 16 lakh and 70,000 माइनस क्वेश्चन पे ड्रॉइंग्स भी दिया है 6 lakhs का, उसको हम सबट्रैक्ट करनी चाहिए. तो अभी आएगा आंसर 50 lakh and 70,000. वेरी इजी. आपको कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करके ड्रॉइंग्स को सबट्रैक्ट कर देनी चाहिए. नाउ आर यू एबल टू बैलेंस द बैलेंस शीट? इज द बैलेंस शीट टैलीइंग? दैट्स ऑल. Okay, it is 60 lakh. Okay, done. 60 lakh and 70,000. All of you clear with this? Yes? Yes, if you are okay, I will go to the illustration number 13. You don't have to worry, you don't have to remind me. I know I will take the illustration number 13. Everybody else? Okay, that's good. Brilliant. Now let us go ahead with the illustration number 13. So my dear students, the only question that I didn't do in this is the illustration number 13. Others, everything I finished. So now please see. Illustration number 13 is also a bigger illustration. Okay, uske pehle I'll be teaching a small concept of provisions. And where did this go? This is Gavaskar question. Okay, just give me a minute. What, Aditya? Trading and P&L account, what do you want me to explain? Trading and P&L account is nothing but, what is the trading and P&L account you want me to explain? I would request all of you, just because for the purpose of asking doubts, don't ask the entire concept because it has already been taught to you, correct? So I want you people to sit down, study first, and then still if you have doubt, I will clarify. Aditya, what is trading account ka? I don't understand. Trading account is something that deals with the finished goods. So what and all you will be having in the trading account? You will have on the debit side opening stock, purchases, direct expenses. On the credit side, sales and closing stock. And then you will be getting only the balancing figure either as gross profit or either as gross loss. From there you will prepare the P&L account. So P&L account mein you will get all the indirect expenses and the indirect incomes, right? So you people have to first study what it is and then you have to come back to ask doubts. Simply I will ask doubts, that will not work, no? Already we are running short on time. So I think you people will appreciate that. So now, my dear students, I have downloaded the new version and it is having the illustration number 13. Illustration number 13 is your exam question which had come in the exam,
But trust me, it is very easiest problem. Just because you see that there are so many adjustments and certain adjustments are like a little typical and little tricky. Okay. All of you, please see here. Okay, this is illustration number 13. I want everybody of you to listen. Don't interrupt me in between. The following are the balances as of 31st March 2022 of Maple states. So you have a lot given here. Then, my dear students, the additional information. Okay, there are 7 adjustments which you people have to take care for. Okay, after the 7 adjustments, what are they asking you to do? They are asking you to prepare a trading and P&L account for the year ended and also a balance sheet. तो ये है पूरा का पूरा question. Also show the rectification entries. इसका meaning है there are some mistakes that you have done. Now you need to rectify them. That is what they are telling you. Clear everybody? So first thing is I will read one by one the adjustments and I will be solving the adjustments one by one. You people have to cooperate with me. Is this clear? तो पहला हम rectification entries को pass करेंगे. The first thing we will be doing in illustration number 13 is pass the rectification entries. तो कहाँ कहाँ पे हमने गलती किया है उसको first हम rectify करने के बाद trading, P&L and balance sheet को prepare करना है. The first mistake that is given to you in the book is purchases include sales return and sales include purchases return. So यहाँ पे what is the mistake that has happened? Okay. So I will be doing just a minute. See this particular illustration number 13 is there in the new study material. Please go to the ICAI.org and download it. Is it okay? किसी के पास नहीं है तो अभी follow करो. I am showing it right. So there is no problem. Illustration number 13, rectification entries. So first one, the rectification entries, what you people need to do? किसी परचेज रिटर्न्स को आप गलती से सेल्स रिटर्न्स में इंक्लूड कर दिया है और सेल्स रिटर्न्स को गलती में परचेजेस में इंक्लूड कर दिया है. So what will be the rectification entry? Can somebody tell me what can be or what will be the rectification entry? The first thing is, everybody please see, sales return का वैल्यू है क्वेश्चन पे. सेल्स रिटर्न का वैल्यू है 2575 रुपीस और परचेजेस रिटर्न का वैल्यू है 1725. Everybody clearly listen to me. You people need not answer also, just listen to me. Okay. Purchases का वैल्यू है, purchases return का वैल्यू है 1725 और sales return का वैल्यू है 2575. Sales return को include किया है purchase पे. Wrongly purchases में they have included, wrong that is, and purchase returns को sales में include किया है. So the first mistake is आप purchases account और sales account को reduce कर देना चाहिए. What you should do? You should remove the value of the wrong sales return, wrong purchases return from the sales and purchases. So my dear students, अभी किस तरह का rectification entry को हम पास करते हैं? What we will do? The rectification entries is purchase को reduce करने के लिए हम purchase को credit करेंगे क्योंकि purchases will always have a debit balance, correct? उसको हम reduce करने के लिए opposite में post करनी चाहिए. So I am going to credit the purchases. Madam, कितना value का? Sales return of 2575 wrongly included. तो हम अभी subtract करेंगे 2575. Clear? Now madam, उस like that sales को भी हम reduce करनी चाहिए madam. So what I will do? Sales को I will debit it because sales को भी reduce करने के लिए opposite side sales का account balance होता है credit balance. उसको हम reduce करने के लिए debit करना चाहिए. Is that clear? कितने amount का? 1725.
So sales account debit to purchases. मैडम अमाउंट्स आर नॉट टैलिंग मैडम, तो अभी क्या करना है? सिंपल, सेल्स रिटर्न को आप परचेजेस में इंक्लूड किया है, उसको रिड्यूस कर दिया है, बट सेल्स रिटर्न का एंट्री पास हुआ है नहीं. सो नाउ पास द एंट्री फॉर सेल रिटर्न. You have reduced from purchases, that is correct, but sales returns का एंट्री अभी तक नहीं हुआ है, परचेजेस में इंक्लूड हुआ है, उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है, बट अभी उस एंट्री को पास कर दो. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री आता है डेबिट साइड पे, बिकॉज ये है रिटर्न इनवर्ड. सो दिस यू हैव टू डेबिट इट. आप कितने अमाउंट को डेबिट करते हो? 2757 को डेबिट करते हो. वैसे ही परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट करना है, क्योंकि अभी उसका एंट्री, यू आर जस्ट नाउ पासिंग द एंट्री. सेल्स और परचेजेस से यू हैव रिमूव्ड इट, एंड नाउ फॉर पासिंग द एंट्री सेल्स रिटर्न विल हैव अ डेबिट बैलेंस. तो अभी you have to debit it. That means you are bringing in this particular amount, and to purchases returns you are bringing in the amount of 1175. इसका नरेशन है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट. Is this clear to everybody? Yes. What are we doing here? We have wrongly included the sales return in purchases return in sales. So first thing what we are doing is simple. We are first reducing the sales and purchases because the return should not be included in that. तो first हमें opposite में post करनी है. Sales account से reduce का sales को debit करना है, purchases से कुछ reduce करने के लिए purchases को credit करना है. This is one part of the entry. But ये है compound entry. दो दो अकाउंट आ रहा है each side. So this is called as a compound entry. तो what is the other side? अभी sales return and purchase return को record कर दो. तो this is the point that you people have to understand. Abhi come to the second point. Goods withdrawn by Mr. XYZ for own consumption included in purchases. तो हमने देखा है already, if you use the goods for personal consumption, I have passed the entry. What will be here? What will come here? What will come here? All of you please see what will come here. When you pass or when you use the goods for your own consumption, it will be called as drawings. Very good, Sandeep Thakur. So it will be drawings account debit to which account? I told you, to purchases. Correct? टू परचेजेस अकाउंट. सो ये वाला अकाउंट अभी ड्रॉइंग्स को आई विल डेबिट एंड देन आई विल रिड्यूस द परचेजेस. कितना वैल्यू का? 3500. 3500 ड्रॉइंग्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस. सो रॉन्गली इंक्लूडेड का मतलब क्या है? परचेजेस को इतना अमाउंट था, बट परचेजेस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे भी यू क्रेडिटेड दिस ऑल्सो, यू विल क्रेडिट. क्लियर एवरीबडी? Drawings to purchases, ये वाला entry, okay? Sandeep Sahu, ये वाला entry you can pass it. You cannot pass it single, like differently you cannot separate it and do it. Single entry में you can pass it like this and it is correct, no problem. Yes. Now everybody please listen to the next entry. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 was included in the wages. So iska what is the galti, what is the mistake here? जब हम wages को installation के लिए पे करते हैं, उसको हम डेबिट करनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के साथ. वो वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अभी हम क्या करना है? इसको रेक्टिफाई करना है. वेजेस को गलती से हमने इंक्रीज किया है. वेजेस होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस. इसको अभी रिड्यूस करने के लिए ऑपोजिट में पोस्ट कर दो. टू वेजेस अकाउंट किसको डेबिट करते हैं? asset account which is nothing but plant and machinery account को अभी डेबिट करके 450 asset को बढ़ा दो और wages को कम कर दो. being wages reduced by the installation amount. आप
रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को पास करने के टाइम पे नरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? नरेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन होनी चाहिए और यू शुड टेक इट टू द असेट अकाउंट एंड नॉट टू द वेजेस अकाउंट. तो अभी हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री को पास किया है. फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825. फ्री सैंपल्स का व्हाट इज द एंट्री? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. आप आपका प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ फ्री में दे रहे हो. सो एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस. क्लियर एवरीबॉडी? बहुत इजी है. ऑल दिस यू वुड हैव लर्नड इन योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दीज टू एंट्रीज. बट दीज टू आई टॉट यू ऑलरेडी. Advertisement to purchases being the advertisement account debited for free samples. Abhi tak everything is clear to everybody? Yes, it is clear. Now everybody please see me. इतना कुछ परचेजेस सभी जगह पे आया है. तो अभी परचेजेस का क्या वैल्यू होता है? First I will show you how much will be the purchases. Everybody please see me. Please look on to the boards. The first thing is purchases का value है यहाँ पे 1,60,000. Okay? कुछ returns है, carriage inward है, carriage outward है, वो नहीं आएगा. Do you have any returns here? No. So it is only purchases account. उसको यहाँ पे 1,60,000 we are going to write. Clear everybody? Yes. Now फर्स्ट एंट्री में 2,575 को हमने रिड्यूस किया है. तो माइनस रॉन्ग सेल्स रिटर्न को सबट्रैक्ट करना है. कितना है? 2575. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? 2575 हम परचेजेस को रिड्यूस किया है तो उसको हम यहाँ पे इफेक्ट दे रहे हैं. यू हैव डन द एंट्रीज बट टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट यू नीड टू वर्क आउट. ओके, तो अभी देखो एवरीबॉडी, द फर्स्ट थिंग आई हैव एंटर्ड माइनस. अभी परचेजेस रिटर्न्स भी है तो इस परचेजेस रिटर्न्स को हम सही से अभी रिड्यूस करना चाहिए 1725. क्लियर एवरीबॉडी? रॉन्गली सेल्स रिटर्न को हम इंक्लूड किया है उसको रिमूव कर रहे हैं और अभी परचेजेस रिटर्न्स को हम रिमूव करना है ना. वी हैव टू डिडक्ट दैट. नो, सो 1725 वी हैव डिडक्टेड. ओके, फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट परचेजेस में हो गया. सेकेंड वन, अगेन परचेजेस को रिड्यूस किया है तो हम कुछ ड्रॉइंग्स ले लिया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो उसको भी हम रिड्यूस कर देना चाहिए. तो यहाँ भी परचेजेस आ रहा है क्रेडिट पे तो वी आर रिड्यूसिंग द परचेजेस. नेक्स्ट, इसमें क्रेडिट कुछ है परचेजेस का? नहीं. सो गो हियर. फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने बांट दिया है 825 रुपीज वर्थ गुड्स. नाउ कैन समबडी एड अप एंड टेल मी ये वाला कितना है द बैलेंसिंग वैल्यू? 172500131. दिस इज 3,300, करेक्ट? 1,53,100 is the net purchases. इसको आप कहाँ पे लेके जाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे you will show this particular value. Everybody got 153,100? Yes, yes, everybody. Everybody, I want you people to answer. 151,375. Oh, I'm sorry. Which one are you doing? Are you doing it correctly? What is the answer that you people got? Yeah. One is telling one answer, the other one is telling the other answer. Correct. 151,375 because I have removed everything. 151,375 you should remove. Everything I'm asking you to add and subtract it, okay? So the answer is 151,375. उसी तरह का हम सेल्स में जाना है. What is the sales value? Can somebody tell me sales value given to us in the question? The sales value given to us in the question is कितना है sales? Where is the sales first of all? Sales is 2,15,300. Very good. सेल्स इज 2,15,300. अब इसमें से गलती से इंक्लूड हुआ है परचेजेस रिटर्न, सो उसको हम 1,000
725 हम रिमूव करेंगे और अभी सेल्स रिटर्न्स है 2575, इसको भी हम रिड्यूस करना है. कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर? और थोड़ा कुछ है? एनीवेयर यू हैव द सेल्स? नो, बस हो गया है, सिंपल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स एवरीबडी? Shivani has told 2,11,000. Is that right? Yes, it is 2,11,000. Everybody, very good. 2,11,000. Is this clear, everybody? Yes? Okay, good. Now, my dear students, this drawings account will go to your balance sheet. Capital account से आप इसको subtract करना है. This is the first one. The next one, plant and machinery. Okay, plant and machinery. Wait, let us go to the next adjustments and then see what is happening. Clear? Now, please look onto the board, everybody. Create a provision of doubtful debts at 5%. क्लोजिंग प्रोविजन क्रिएट करना है डेटार्स में डाउटफुल डेट्स का 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स ऑन 2.5%. This is a very very important adjustment. Is this clear? But I will do it a little later. Abhi thoda I'll take some time and do it. Now see the sixth adjustment. Sixth wala hai depreciation. Plant and machinery में 15% प्रोवाइड करना है, फर्नीचर पे 10%. अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू होता है 19,550. अभी यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 19,550. बट विथ दिस you should add the installation cost of 450. अभी ये बन जाता है 20,000. इसमें depreciation 15% कितना आएगा? 3,000 आएगा. The balance you will show it in the closing balance sheet is 17,000. ये वाला depreciation जाएगा P&L account debit side पे. This is first thing. Okay, दो asset है question पे. एक asset है plant and machinery. The second asset is the furniture. अभी furniture का value कितना है question पे? 10,250 है. इसमें 10% is 1,025. इतना है depreciation. Simple. इसमें कुछ adjustment है? नहीं. Furniture सब वो they have done it correctly. So there is no problem. Yes, everybody. So directly the value will be 10,250 minus 1,025. तो कितना आएगा यहाँ पे? The balancing figure or the this value 9,225. तो total depreciation कितना है? 1,025 plus 3,000. Depreciation 4,025 है. ये जाएगा P&L account पे. Okay, and the closing value of plant and machinery है 17,000. बैलेंस शीट में जाएगा. फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है 9,225. इज दिस क्लियर? अभी ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा P&L अकाउंट पे डेबिट साइड पे. सो मैंने अब तक आई हैव पास्ड द एंट्रीज एंड आई हैव शोड यू इसका इफेक्ट क्या है. तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे. सेल्स है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे. दैट्स ऑल. अभी ये आएगा डिप्रिसिएशन P&L अकाउंट का डेबिट साइड में. टोटल डिप्रिसिएशन 3,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 1,025 ऑन फर्नीचर. सो 4,025 वहां पे जाएगा. ओके, that is what we have done here. Is this clear to everybody? Yes, you can do it then and there also, no problem. Okay, that is perfect. Now we are going to look at the provision. Now we are going to look at the provision, my dear students. You are going to create a provision for doubtful debts. Okay, madam. Now, already there is a provision for doubtful debts given to me. There is also bad debts given to me in the question. So, madam, you told me, somebody asked me the provision for doubtful debts ka how we should do. I didn't understand that. Please see, my dear students, whenever you have provision for doubtful debts adjustment given to you in the question, the easiest way to do is open the account. Okay, fifth adjustment, first account that you open is provision for doubtful debts. Clear? अकाउंट को ओपन कर दो. प्रोविजन होता है लायबिलिटी. ओपनिंग बैलेंस विल कम विद साइड, माय डियर स्टूडेंट्स. ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे. व्हाट इज द बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस 3,200 आएगा. इज दिस क्लियर?
Okay, may trial balance say whatever values are given to me, I am just taking them. So opening balance है 3,200, bad debts हुआ है which is 1,100. Clear everybody? यहाँ तक everybody is clear. Now the closing provision. क्वेश्चन में दिया है हम क्लोजिंग प्रोविजन को कंप्यूट करने के लिए 5% वी शुड टेक ऑन द डेटार्स. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑलवेज वी शुड कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओनली. किसको कैलकुलेट करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही हम कैलकुलेट करेंगे. तो अभी द फर्स्ट थिंग विल बी 5% ऑन 1,20,000 because 1,20,000 is the debtors value. इसमें कुछ subtraction कुछ नहीं करना है because bad debts trial balance में आया है तो यहाँ पे एक adjustment करने से बस है. There is no other bad debts in the adjustments. ठीक है? Trial balance में bad debts is given to you, so you are taking it into the account and closing it here. All of you please see here. ये वाला आता है 6,000. अभी इसको बैलेंस करके what is the P&L account? What is the value we need to take it to the P&L account, my dear students? 7,100 minus 3,200. How much will this come to? I want everybody to answer. 209, 6 minus 3. 3,900. This is the value. You will take it to the P&L account. Everybody please see. You will take this value to the P&L account. Abhi come to the next account that we need to prepare. Provision for discount on debtors. This is also coming. Ma'am, provision for discount on debtors. How it is? How should we calculate? Same like provision for doubtful debts. Clear hai? अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा. जो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास 1,375 ये will come as it is. If you have given any particular discount on debtors during the year, आपने कुछ discount दिया है debtors के लिए, if you have given it, you should write that also. All of you please see here. I'm showing the question once again. Provision for discount on debtors 1,375 होता है आपका opening balance. Okay madam, done. आपने कुछ दिया है. Have you given any discount during the year? नहीं madam. नहीं दिया है तो ये वाला हो जाएगा 0. तो अभी क्लोजिंग प्रोविजन कितना होना चाहिए? हाउ मच इज द क्लोजिंग प्रोविजन? मैडम 2.5% ऑन द डेटार्स. माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. टू क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट एक्चुअल डेटार्स का बैलेंस 1,20,000 है, करेक्ट? बट माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्लोजिंग प्रोविजन को फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है. Always discount will be given after the doubtful debts only. तो closing provision for doubtful debts को first subtract करने के बाद you should apply 2.5%. Everybody please see here. After you are going to do the closing balance of provision for doubtful debts, you should remove that remaining. So how much it is? 1,14,000 into 2.5% is how much ma? 2,850. 2,850. Everybody got this? तो अभी all of you please see. इसको हम बैलेंस करने से डेबिट साइड इज मोर तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा. इसको लेके जाना है P&L अकाउंट पे. व्हाट इज दिस? 2,850 minus 1,357. 1,375. किसी भी somebody tell me the answer. How much? 1,475. माय डियर स्टूडेंट्स इस इन दोनों को हम P&L अकाउंट डेबिट साइड में लेके जाते हैं. और डेटार्स का वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द डेटार्स वैल्यू यू विल टेक टू द बैलेंस शीट? डेटार्स है 1,20,000 था ओरिजिनली. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 6,000. उसको माइनस करने के बाद डिस्काउंट फॉर डेटार्स भी आप माइनस करने से व्हाट इज द वैल्यू यू गेट? 1,14,000 minus 2,850 gives you how much? 1,11,150. 1,11,150. Is that the answer? 1,11,150. Everybody, did you all understand now? Any doubts you have? How did I calculate this particular thing, madam?
This is the same thing. Now I will show you something here, my dear students. आपको मैं टेक्स्ट बुक में how they have done also I will show it to you. वो सेम ही है. It is the same. उसने यहाँ पे प्लीज देखो, provision for doubtful debts में he has taken it separately, but we have taken बैड डेट्स के साथ. सो 2800 प्लस 1100 है हमारा 3900. सो इसको हम पी एंड एल अकाउंट में हमने लिखा है. तो वॉट एवर वी हैव डन इज ऑल्सो करेक्ट. बुक में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बैड डेट्स को पी एंड एल अकाउंट में शो किया है, वो भी करेक्ट है. एनीथिंग यू विल गेट द सेम आंसर. आंसर एक ही होगा. एंड फॉर द डिस्काउंट फॉर डेटार्स, ऑल ऑफ यू प्लीज सी आपका बुक में. Yeah, they solved by whatever method, but you can do it here using this particular method. 1475 है, हमको भी 1475 आ गया है. If you ask me, मैडम कौन सी मेथड फॉलो करनी है, प्लीज ओपन दी अकाउंट. आप अकाउंट ओपन करने से you will get to understand it very very easily. It becomes very very easy for everybody. Is this clear everybody? And the final adjustment, everybody please see here, a tricky adjustment. बहुत tricky नहीं है, normal adjustment है. Closing stock का value directly is not given to you in the question. How it is given to you in the question? उसने दिया है बैंक overdraft is under hypothecation is secured against hypothecation of stock. तो इसका मतलब है आपने स्टॉक को सिक्योरिटी में देके बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया है. आप बैंक से लोन ले लिया है. बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग इज यू हैव टेकन अ लोन फॉर विच यू हैव गिवन द सिक्योरिटी एज योर क्लोजिंग स्टॉक. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग as on the date has been considered as 80% of the real value of the stock and after adjusting marginal value. तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर की. यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? वेयर इज द बैंक ओवरड्राफ्ट? 80,000 है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टू फाइंड आउट द bank overdraft, not bank overdraft. You know bank overdraft, you need to find out the closing stock ka value. My dear students, you need to find out the closing stock ka value. So what is this? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 as on 31/3/2022. बट बैंक मार्जिन डिडक्ट करने के बाद, what is that? 20% मार्जिन डिडक्ट करने के बाद 80% ने सैंक्शन किया है. उसके बाद मार्जिनल वैल्यू भी 80% है. इसका मीनिंग इज वेरी वेरी इजी. आप 80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट अभी मिला है, उसका फॉर हाउ मच यू हैव रिसीव्ड द 80% और फॉर हाउ मच यू हैव रिसीव्ड 80,000, आपने बैंक से लोन लिया है. ओके, you have given security of what? Of your stock. So अभी हम यहाँ stock के value को x समझते हैं. We don't know the value of stock, so stock value we will take it as x. Okay? अभी इस x में 80% वोट देने से आपको 80,000 मिला है. ये है स्टेप नंबर 1. तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 80,000 इंटू डिवाइडेड बाय 80%. ये है स्टेप नंबर 1. ओके, तो आपका रियल वैल्यू कितना आएगा? अभी रियल वैल्यू व्हेन यू डिवाइड बाय दिस यू विल गेट 1 लाख रुपीस. बट यहां तक क्वेश्चन इज नॉट एंडिंग. अगेन दे आर सेइंग ये वाला भी. ओके, दिस ऑल्सो इज समथिंग कॉल्ड एज द मार्जिनल वैल्यू. तो मार्जिनल वैल्यू भी क्या है? अभी वो x लेके सेम थिंग वी फाइंड आउट, that is x into 80% दिया है ये पर्टिकुलर वैल्यू. तो अभी x होता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 80%. सो 2 टाइम्स आपको ऐसा करना पड़ेगा. 2 टाइम्स आपको ऐसा करना पड़ेगा. Okay, now what is the value that you people will be getting? You people will be getting the stock value. The closing stock value is 1,25,000. अभी हम we will do the reverse working and check. इसमें margin 20% को डिडक्ट किया है. 20% ऑफ 1,25,000 कम्स टू कितना? 20% कम्स टू 25,000. तो कितना आया है? 1 लाख. इसमें से फिर रियल वैल्यू के लिए और 20% सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिला है बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000.
So whatever we have done is correct. So whenever a question is given to you, बैंक ओवरड्राफ्ट, या आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. Whenever आपको क्वेश्चन दिया है, पर्टिकुलर थिंग इज कंप्यूट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विद द लोन वैल्यू, तो आप क्या करना है, ब्लाइंडली आंखों बंद करके वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ द लोन, यहाँ पे वैल्यू था लोन का 80,000 इंटू, ओके, इनटू माय डियर स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज दिया है उसको ऐसा लिख दो. दैट्स ऑल. यहां 2 बार 80% है, इंटू 100/80 इंटू 100/80 रिवर्स करना है. Whenever you want to find out the value of the stock from the loan, what you should do, take the value of the loan and reverse the percentage. So आपको 80% आ गया तो 100/80, आपको फिर यहाँ पे 60% देने से 100/60 करनी चाहिए. ओके, 2 बार क्यों किया है तनीषा? बिकॉज क्वेश्चन पे 2 बार दिया है. प्लीज सी वाई आई एम डूइंग 2 times मीन्स फॉर मी नो जॉय इन डूइंग 2 times. ओके, इट इज गिवन टू यू 2 times टू बी डन. यहां देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहला है रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए 20% डिडक्ट किया है, एंड फिर आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू. तो समटाइम्स नो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक क्या है, बैंक आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000 होने से भी उसके प्रोटेक्शन के लिए, सो द बैंक वुड रिमाइंड टू बी प्रोटेक्टेड एट एवरी टाइम. सो इट विल थिंक इवन इफ क्लोजिंग स्टॉक गिव्स मी 1,25,000, मैं उतना लोन नहीं दे पाऊंगी, आई विल रिड्यूस द परसेंटेज, उसको हम मार्जिन बोलते हैं. तो यहाँ 2 बार 20% को रिड्यूस करने के बाद उसने 80,000 लोन दिया है. बट यू शुड अंडरस्टैंड 80,000 लोन का वैल्यू होने से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा ही रहेगा. इट विल बी मोर ऑलवेज. तो कितना मोर है, इसके लिए वॉट एवर परसेंटेजेस आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन उसको रिवर्स कर दो. यहाँ 2 बार हमने रिवर्स किया है, तो दैट इज वाई इट कम्स ऑफ लाइक दिस. एवरीबडी क्लियर? Everybody understood? Okay, Tanisha, you have understood. The others? Yes? Clear, Sai Pranavi? If that 70%, yes, you have to take it like that only. Sri Krishna, if they say 70%, don't take 2 times. If they tell 2 times, then you take it. What is your doubt, Tulsinath? If they tell 2 times, you are going to take it, Sri Krishna. You understand? If this is given as only 1 time, take it only once. इस question पे 2 बार दिया है, क्यों? That is why I have applied 2 times. If the question gives only 1 time, do 1 time, no? Okay. So this is the entire question. Okay, this is the entire question with respect to this particular illustration number 13. I have explained you everything. Everything I have explained, but I will once again redo it. Plant and machinery will go to the balance sheet. I have showed in the working note. Furniture fitting B will go to the balance sheet asset side. Bank overdraft of 80,000 will go into the balance sheet liability side. Capital account है 65,000. आप first trading account and P&L account prepare करने के बाद, if you get a net profit, add it with the capital account. और इस drawings के साथ, okay, इस drawings के साथ whatever is this 8,000, यहाँ पे एक और ड्राइंग्स है 3,500. सो ड्राइंग्स बन जाएगा 8,000 प्लस 3,500, 11,500. ये वाला ठीक है. आफ्टर द 11,500 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट. परचेजेस का वैल्यू मैंने बताया है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ले लो. वेजेस से 12,165 से 450 को रिड्यूस कर दो. दैट विल बी द वेजेस, एंड ये वाला वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मैंने एक्सप्लेन किया है. सन्ड्री डेटार्स का वैल्यू भी मैंने एक्सप्लेन किया है. टेक दैट टू द बैलेंस शीट. सन्ड्री क्रेडिटार्स को भी आप लेके जाते हो बैलेंस शीट पे. दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज लाइबिलिटी साइड एज करंट लाइबिलिटीज. बैड डेट्स का इफेक्ट वो आ गया है, हो गया. अभी बैड डेट्स रिकवर्ड ये आएगा P&L अकाउंट क्रेडिट साइड पे. सैलरीज और सैलरीज पेएबल भी दिया है. My dear students, इस तरह से देने से, my dear students, please listen. Salaries 22,550 only you will take it to the P&L account. Madam, हम यहाँ पे salaries payable है, so should we add it and take? नहीं. This is not an adjustment. ये वाला adjustment में नहीं आया है. But this is given into the trial balance. तो ये जाएगा बैलेंस शीट पे, करंट लाइबिलिटीज पे एक ही इफेक्ट आएगा.
तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, व्हेन सैलरीज पेएबल वो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडजस्टमेंट में देने से, यू शुड शो इट इन टू प्लेसेस, पी एंड एल में ऐड करोगे और बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज पे यू विल शो. बट हियर सैलरीज पेएबल is not given to you as an adjustment, but it is coming in the trial balance. So trial balance में आने से इसका मतलब है सैलरीज में ऑलरेडी ये इंक्लूड हुआ है, तो एक ही इफेक्ट अभी देना है, इस सैलरीज पेएबल को सीधा बैलेंस शीट में लेके जाओ, करंट लायबिलिटीज से ऐड करो. दैट इज नाइस. अभी आपको आया है प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट जाएगा बैलेंस शीट पे असेट साइड, करंट असेट्स पे. रेंट जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे. कैरेज इनवर्ड ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे. कैरेज आउटवर्ड जाएगा पी एंड एल अकाउंट पे डेबिट साइड पे. सेल्स का वैल्यू आई हैव कंप्यूटेड एंड टोल्ड. अभी देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3350 के साथ प्लीज ऐड दिस 825 ऑल्सो बिकॉज इट इज फॉर पब्लिसिटी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दो. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आएगा असेट्स में. ऑफिस एक्सपेंसेस है 10,160. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है 3,000. ये दोनों आएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे. सभी डाल के बैलेंस करके प्रिपेयर द बैलेंस शीट. इट विल टैली. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Do you people have any doubts with this? How to calculate, how to do? Every question is easy, my dear students. You people have to apply a little bit of logic. By the time you read the question, you think, Ayyo, it is very big, so it will not come. It is very difficult, this and that, it will not come. You have to know, okay, I can handle this. I can manage this, okay? Then only you will get confidence. You people have to give self-motivation and do such questions. Now, if I'm going to solve, everything will look easy for you. In the last class, when I didn't take this particular illustrations, you people would have had a thought, okay, this chapter is a little difficult, but madam did not take everything, correct? You would have had that thought. Now, after I clarified illustration 7, illustration number 13, things became very easy for you. It looks very easy, but you people have to go back and practice. If you don't practice, it will not come. Yes, this is a 12-mark question. This is a 12-mark question. So that is why they have included and given it here. And finally, my dear students, the last 10 minutes I would utilize to do your practical question number 1 adjustments, because practical question number 1 ka adjustments is to a somewhat tricky. Is this clear, everybody? So I will be doing that now. We still have 10 minutes for 1 hour to get over, and after that I will start with my company accounts. Okay, remaining. Now please see here, illustration 1 से लेके 13 तक I have finished the entire unit number 1. Okay, now we are doing the practice problems in this. वो practice problem में भी I solved the practice question number 5. Okay, now I will do the practical question or the practice question 1 ka adjustments alone. Is this clear, everybody? I will be doing only the adjustments because it is a little difficult. Because I know you people will tell, madam, very, very difficult, madam, very, very difficult. Definitely not difficult. It is easy only. But I want to solve those also for you. So with that, we will finish this. I want you to go back and do your practice question number 2 and number 4. Very, very easy. Yeah? Okay. Now, please, all of you, please see here. This will take some time. I want you people to listen very, very carefully. So this practice question number 1 from the particulars extracted from the books of Mr. Ganguly, prepare a trading P&L and balance sheet. So ये है full question. Okay, and here Ganguly's capital is given, opening stock is given, sales returns दिया गया है, purchase returns दिया है, carriage inwards trading account में जाएगा, rent जाएगा P&L account debit में, salaries जाएगा P&L account debit में, sundry creditors आएगा balance sheet पे, sundry debtors and creditors go to the balance sheet, asset and liabilities. Loan taken from Dina Bank. So there is a bank. These people have taken a loan. ये वाला loan को आप interest pay करनी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ दिया है information. Interest paid 4,500. Printing and stationery का expense दिया है, वो जाएगा P&L पे. Advertisement का expense जाएगा P&L पे. Interest received है, तो ये है income.
कैश विद द ट्रेडर्स बैंक अकाउंट, तो कैश एट बैंक ये वाला है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम है, ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट्स मेड, तो इसका मीनिंग है दिस गंगुली हैज इन्वेस्टेड आउटसाइड, तो उसका इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो इंटरेस्ट को रिसीव कर रहा है, तो ये है असेट साइड में जाएगा 25,000। फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है डेबिट, ये एक्सपेंस है, आपने डिस्काउंट दिया है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस भी एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंस है पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये दोनों भी एक्सपेंसेस है पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड है 1900, डिपॉजिट्स एट 10%, तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट 5% का और ये डिपॉजिट्स 10% का किया है, और ड्रॉइंग्स भी है, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट अकाउंट एज एन असेट इट विल सिट। सो अभी मैंने बोल दिया है वॉट एवर वेर एवर इट विल बी गोइंग। नाउ आई कम टू द एंट्रीज। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, I come to the adjustment. The first adjustment is the value of stock है 3,93,000, तो closing stock का value is given 3,93,000, तो ये जाएगा दो places पे। कहाँ पे? Closing stock trading account credit side पे 3,93,000 you will write, and then you will go to the balance sheet as a current asset. Now please read the second part. This includes the goods returned by the customers to the value 15,000 for which no entry has been passed. आपने entry goods return के लिए pass नहीं किया है. Can somebody tell me what will be the entry for the goods returned? When you have done sales, you have returned, they have returned back goods to you. That is nothing but sales return hai. What is the sales return entry? Anybody can tell me? Sales return का balance होता है. Very good. Sales return to cash? No. Sales return account debit to the customer account. Very, very good. So 15,000 and 15,000. Everybody, sales return recorded. This is the effect. Okay, okay, very good. Sri Krishna, good. If you answer, it is good. If you don't know, learn it. Okay, this is not a competition now. Now, my dear students, please see here. There is a sales return. So, abhi everybody already there is sales return given to you in the trial balance. उसके साथ इस sales return को भी अभी add कर दो. My dear students, the meaning here is sales return. One particular entry you did not add it, correct? So now what you are going to do? You have a sales return already 43,000. उसके साथ ये 15,000 को अभी add कर दो. तो what is the total sales return you will be taking? You should take 58,000 as the sales return. Is this clear? This is the entry number 1. Madam, और इसमें closing stock है ना मैडम, इसमें 3,93,000 है. Why you are not adding 15,000? It is already given. This has been included in the stock. तो तब वो return आ गया है, उसको हम closing stock में add किया है, तो फिर don't add it. Clear everybody? So this will go to your trading account on the credit side, and this will go to your balance sheet on the asset side as current asset. Is this clear? Now we go to the second entry or the second adjustment. Everybody please see the second adjustment. The second adjustment, very simple adjustment. What it is? Purchases include furniture purchased. So abhi furniture if you are going to purchase, what is the rectification entry? Furniture account को debit करके परचेजेस से उसे हटाना है. तो व्हाट इज द वैल्यू मा? 10,000 rupees. So I am now going to reduce from the purchases. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे पास करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, करेक्ट? नाउ हाउ मच इज द फर्नीचर अकाउंट? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 9,000. अभी आ जाओ यहाँ पे. प्लीज सी हियर. The purchases include on 1st of January 10,000. Abhi dekho, the 2 and 3 are interrelated. So these two entries or these two adjustment talk about furniture. तो इस furniture के ऊपर depreciation को provide करो 10,000. Is this clear?
तो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करके परचेजेस को रिड्यूस करके फर्नीचर को वी हैव एडेड. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. माय डियर स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का एंड परचेजेस भी किया है 1st of January 2022. ओपनिंग बैलेंस है 9,000, परचेजेस किया है 10,000. अभी देखो, प्लीज सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रिसिएशन का रेट है 10%. तो अभी इस 9,000 में यू विल चार्ज द एंटायर ईयर. 9,000 into 10% into 1/12. Not 1/12. 12/12 you will be doing it because for the full year. But 10,000 rupees का फर्नीचर फुल ईयर का आएगा नहीं. इट विल कम ओनली फॉर 3 months. जनवरी 1st आपने परचेज किया है तो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, 3 months के लिए ही यू शुड प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन. Yes, you will provide the depreciation. Everybody, can you tell me what is the answer? This will be 900 plus this will be 250. That is right. So the total depreciation will be 1,150. So 19,000 total furniture minus 1150, you will be taking 17,850 into the balance sheet under the furniture. Why 9,000? Sri Krishna, please see this 9,000 have opening balance. It is given to you in the trial balance. On the 9,000, I will apply 10%. All of you, please see. Question में दिया है. I am not doing anything separately. That is why please listen to the question carefully when I am explaining. अभी यहाँ पे देखो, फर्नीचर का वैल्यू ओपनिंग बैलेंस है 9,000. ये है हमारा पास 1 year का. So I am putting 10% on that. बट इस वाला 10,000 को मैंने परचेज किया है 1st of January के लिए तक. तो आई विल टेक ओनली 3 months का डिप्रिसिएशन. सो ये बात इट इज वेरी क्लियर. तो अभी डिप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया है 1,150 एंड हियर द क्लोजिंग वैल्यू टू बी टेकन फर्नीचर इन द बैलेंस शीट इज 9,000 plus 10,000, 19,000 minus depreciation is this much. Is this clear for everybody? This is the second adjustment. अभी third adjustment हम interest paid के बारे में देखेंगे. Very very important adjustment. I want everybody of you to concentrate. Okay? Don't after explaining, madam फिर explain करो. No. I have to start the company account. So be very very careful and be very very attentive in the class. The loan account from Dina Bank is as follows. अभी देखो, the total loan of 1 lakh rupees, please concentrate. हमको कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में? लोन फ्रॉम दीना बैंक इज 1 lakh. तो इस 1 lakh का ब्रेकअप यहाँ पे दिया है. ओके, दोनों सेम ही है. द लोन इज 1 lakh rupees, बट ऑल ऑफ यू प्लीज सी, आपने 50,000 1st of April ले लिया है, बट द नेक्स्ट 50,000 आप कब लिया है? एंड डेट में लिया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर टेकिंग समथिंग ऑन द क्लोजिंग डेट, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज यू हैव टेकन इट ऑन द अकाउंट क्लोजिंग डेट. तो एंट्री आएगा ए 50,000 का, बट इंटरेस्ट यू विल नॉट चार्ज. इंटरेस्ट आएगा ओनली ऑन दिस 50,000. माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने टोटल लोन लिया है 1 lakh rupees, बट 1 lakh rupees को 2 इंस्टॉलमेंट में वी हैव टेकन. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 वी हैव टेकन ऑन द ओपनिंग डेट. तो इसमें और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे. कितना परसेंटेज? इट इज गिवन टू अस 12%. तो हम पे करेंगे 12% का इंटरेस्ट on this particular 50,000. इस 50,000 पे we will not calculate the interest. Why? ये तो closing date 31st में ही हमने ले लिया है. तो हम 31st में कुछ इंटरेस्ट 1 day के लिए, कुछ इंटरेस्ट कब we are not going to give them. So my dear students, this is very very important. Did you understand? Yes, Sandeep Thakur, very good. The interest will be 12% on 50,000 will be 6,000. आप गलती से 1 lakh into 12% डालने से आंसर रॉन्ग हो जाएगा, because only one installment we have taken for the full year. So 50,000 into 12%. अभी यहाँ पे देखो, 4th and 6th are interrelated. ये क्या है? Interest paid includes 3,000 paid to the Dina Bank. Total interest paid कितना है my dear students? All of you please see.
पी एंड एल अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट पेड है 4500, ओके। इसमें दीना बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 3000 है मैडम। उसका मतलब क्या है मैडम? रिमेनिंग कुछ और इंटरेस्ट है। दिस इज अदर इंटरेस्ट विच यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। उस 1500 का कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है। तो 1500 इज इंटरेस्ट पेड एंड दैट विल कम। नो आउटस्टैंडिंग, नो नो नो, द आउटस्टैंडिंग नहीं है। 4500 टोटल इंटरेस्ट है, उसमें 3000 दीना बैंक को पे किया है, तो रिमेनिंग 1500 होता है अदर इंटरेस्ट। ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। अभी देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम दीना बैंक कितना है? 50,000 इंटू 12% है, कितना आएगा? 6,000 रुपीज मैंने पे किया है। आई मीन आई हैव टू पे 6,000 ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन, बट दीना बैंक का इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में दिया है ओनली 3,000 इज पेड। तो पेड इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा लिटिल बिट मोर एडजस्टमेंट इज देयर। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा दिया है, दैट इज टोटल इंटरेस्ट पेड 4500 दिया है, उसमें 3000 ओनली पेड टू दीना बैंक दिया है। उसका मीनिंग है ये वाला अभी भी है, बट इट इज सम अदर इंटरेस्ट, सो दिस इज इंटरेस्ट पेड। क्लियर मैडम? तो अब हम कैसे लेके जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट पे टोटल इंटरेस्ट आएगा दीना बैंक का 3000 प्लस दीना बैंक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000 प्लस 1500 आएगा। ओके, सो ये वाला होगा 7500। और इन अदर वर्ड्स यू कैन जस्ट से ये 4500 टोटल इंटरेस्ट पेड है, उससे आई कैन ऐड दिस 3000 दैट इज आउटस्टैंडिंग। Did you all understand this or you have any doubts here? It is a simple entry, okay? अभी तक you have seen interest paid P&L में भी 3000 है, okay? You are like you would have seen only 3000. तो ये इस बात का there was no difference, but in this question additionally थोड़ा कुछ interest है, that is 1500, but that you will take it and show it. दीना बैंक के कैलकुलेशन के लिए आप just 3000 को लेनी चाहिए, because in the question it is given even though the total interest paid as per trial balance is 4500, उसमें से 3000 only pertains to दीना बैंक इंटरेस्ट। तो दीना बैंक का लोन में कितना इंटरेस्ट यू शुड पे? 6000 पे किया होगा, बट व्हाट यू हैव पेड? यू हैव ओनली पेड 3000, सो 6000 माइनस 3000, okay, 6000 minus 3000 will come as 3000. Geeta, please wait, let me finish this. ये वाला बात did you all understand? So 7500 जाएगा P&L account debit side पे, 3000 outstanding जाएगा to the balance sheet under current liabilities. 3000 outstanding interest will come into the picture. Simple, very very easy. संदीप प्लीज सी हियर, आपका 4500 टोटल इंटरेस्ट पे किया है ट्रायल बैलेंस से, उसमें 3000 इज पेड टुवर्ड्स द दीना बैंक। तो दीना बैंक के लिए यू ओनली टोल्ड मी मैडम 6000 वी नीड टू पे, बट उसमें मैंने पे किया है 3000, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा 3000। सिंपल, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जाएगा बैलेंस शीट करंट लाइबिलिटीज पे, बट व्हाट इज द इंटरेस्ट यू विल टेक द पी एंड एल अकाउंट? मैडम दीना बैंक का इंटरेस्ट मैंने पे किया है 3000, आउटस्टैंडिंग है 3000, इन दोनों के मिला के 6000 दीना बैंक का इंटरेस्ट है। इसके साथ अगला द अदर इंटरेस्ट इज 1500, किसके लिए पे किया है? इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट इंटरेस्ट पेड, तो उसको भी मैं अभी लेके आना है, सो इट विल बी 7500। Clear everybody? Now we are going to go ahead with the debtors ka interest. Sri Krishna, go and practice again, see the video, you will understand, okay? Again and again the same thing, I can't repeat. Now all of you please come here and please see here. Everybody, sundry debtors ka balance, very very important. Sundry debtors include 20,000 due from Robert and sundry creditors include 10,000 due to him. इसके साथ please read the 9th one also. Make a provision for doubtful debts at 5% on the balance under sundry debtors. No such provision to be made for the deposits. तो इसका मीनिंग है my dear students, the meaning of this entry, there is a person Robert. All of you please listen very carefully. There is a person called Robert. इस Robert को
ही इज बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। कैसे हो सकता है मैडम? रॉबर्ट को आपने गुड सेल किया है, तो रॉबर्ट आ गया है डेटर्स के लिस्ट में 20,000। ही हैज टू गिव द कंपनी मनी। बट क्या हुआ है, कंपनी उससे परचेजेस भी किया है 10,000 रुपीज का। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो एक ही पर्सन दोनों क्रेडिटर एंड डेटर है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर एडजस्टमेंट। व्हेन वन पर्सन इज बोथ द डेटर एज वेल एज द क्रेडिटर, तो व्हाट वी कैन डू, हम सेट ऑफ करते हैं। द सिंपल एग्जांपल इज, यू गो टू द शॉप टुडे एंड यू गिव हिम 100 रुपीज। आपका एक्सपेंसेस हुआ है 50 रुपीज बस। ओके, सो यू टेल हिम चेंज इस 50 रुपीज भैया आप रख लो, अगला बार हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द शॉप, वो 50 रुपीज ऑलरेडी है, करेक्ट? तो अभी कुछ हुआ तो वो 50 रुपीज एडवांस को वो डिडक्ट करके ही विल टेक द रिमेनिंग अमाउंट। सो द सेम वे इन द sundry debtors, my dear students, in the sundry debtors there is this person who should give the company 20,000. He is also a creditor who यू हैव टू गिव 20,000। इस दोनों को आप सेट ऑफ कर देंगे। सेट ऑफ करके 10,000 हु हैज टू गिव होम? क्रेडिटर का बैलेंस इज लेस, डेटर का बैलेंस इज मोर, तो ये अभी डेटर बैलेंस में 10,000 होएगा। तो रॉबर्ट रॉबर्ट अभी सेट ऑफ करने के बाद हमारा डेटर्स में केवल 10,000 में रिड्यूस किया गया है। he had to give or he had to pay 20,000 as debtor to us, but already हम उसको पे करना है 10,000। इस दोनों को सेट ऑफ करके अभी रॉबर्ट हमको 10,000 देने से बस है। इज दिस क्लियर? तो ये वाला एडजस्टमेंट को हम सन्ड्री डेटर्स के कैलकुलेशन पे लेना है। तो टोटल सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस कितना है? सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस गिवन टू अस इन द ट्रायल बैलेंस इज, everybody please see, sundry debtors ka balance given to us in the balance is, in the trial balance is 1,20,000। everybody please see, sundry debtors का balance है 1,20,000। इसमें से हम पहला रिड्यूस करना है ये वाला, करेक्ट? कस्टमर ने रिटर्न दे दिया है, तो अभी इसको हम रिड्यूस करेंगे, दैट इज द सेल्स रिटर्न। क्लियर एवरीबॉडी? एंड अभी देखो कितना आपने एडजस्ट किया है, 10,000 को आपने रिड्यूस किया है डेटर बैलेंस से, तो अभी वो सेट ऑफ के वजह से 10,000 इज बीइंग रिड्यूस्ड। बिकॉज रॉबर्ट है, उसको हम 10,000 देना है, उसको हम मिटा देंगे, तो डेटर्स का बैलेंस 10,000 कम हो गया है। How much is the remaining balance of the debtors? On this 95,000, अभी you have to apply the provision of 5%। कितना आएगा अभी? 4,750 है प्रोविजन, ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट पे। क्लियर एवरीबॉडी? क्लोजिंग प्रोविजन है और ओपनिंग प्रोविजन का कुछ भी नहीं है। देयर इज नो ओपनिंग प्रोविजन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो यहाँ ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस नहीं है, तो अकाउंट कुछ भी मत बनाओ। सो डायरेक्टली यू विल टेक द पी एंड एल अकाउंट दिस पर्टिकुलर क्लोजिंग बैलेंस, और बैलेंस शीट पे 95,000 माइनस 4,500 आएगा 90,250। तो 90,250 है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड द डेटर्स एडजस्टमेंट? तो डेटर का एडजस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ 15,000 रिटर्न हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के साथ ये वाला सेट ऑफ भी यू शुड सब्ट्रैक्ट इट। व्हाई? बिकॉज वन पर्सन इज बोथ डेटर एज वेल एज द क्रेडिटर, सो यू शुड सब्ट्रैक्ट दैट। कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है? क्रेडिटर लेसर वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 10,000 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इसको भी यहाँ लेके डेटर से बैलेंस रिड्यूस करने के बाद व्हाट इज द नेट बैलेंस, उसमें क्लोजिंग प्रोविजन को कंप्यूट करना चाहिए। इज दिस क्लियर? और द सेकेंड इफेक्ट ही, यस तनीषा वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस दिया है 84,000 ट्रायल बैलेंस में। इसमें भी ऑल ऑफ यू प्लीज सी, इस 74,000, इट इज नॉट 84, 74,000 में भी आप अभी 10,000 को रिड्यूस करके 64,000 लेके जाना है बैलेंस शीट। वेरी गुड तनीषा। सो 74,000 माइनस 10,000 करना
है because creditors be reducing by 10,000, debtors also reducing by 10,000. तो ये ऐसा जाएगा sundry creditors का value. Till this everybody clear? The first one sales return, उस entry का हम ऐसा लिख के sales returns को add किया है और debtor से we have subtracted. The second adjustment is with furniture to purchases. इस entry को पास करने के बाद इस furniture में भी हमको depreciation calculate करने के लिए कुछ adjustment है. Opening balance में full depreciation, during the year purchases में 3 months का depreciation आएगा. तो depreciation compute करने के बाद we understood the closing balance. Then we went to interest paid. यहाँ भी थोड़ा adjustment, it is a little complicated. ओके दीना बैंक का इंटरेस्ट हम वो लेडजर को देख के जस्ट 50,000 में 12% कैलकुलेट किया है. क्यों 50,000 ही लिया है फुल ईयर का. द नेक्स्ट 50,000 इज टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st मार्च. उसमें थोड़ा कुछ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करो बट द रिमेनिंग 50,000 फुल ईयर का इंटरेस्ट आएगा. सो 6,000 पे करना है, आप पे किया है जस्ट 3,000. ये वाला भी दिया है एडजस्टमेंट पे. तो अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा 3,000 का. तो the value you will take to your P&L account is 4,500 plus 3,000, 7,500 आप लेके जाएंगे P&L account debit side पे. Tanmayi Parid, no, not see sales return from the debtors every time you need not do, but if it comes as an adjustment you need to do. See, is particular trial balance may be you have the sales return, correct? But you are not going to subtract because already the effect has come. ये वाला sales return आ गया है adjustment में which you forgot. That alone you will take it now. Okay? So this one is clear to everybody. Pay किया है and finally we have come to the sundry debtor का adjustment. इसमें two things will get adjusted. The first one what will happen, एक ही पर्सन दोनों डेटार और क्रेडिटर होने से यू कैन सेट इट ऑफ. तो यहाँ पे सेट करने से 10,000 डेटार से भी रिड्यूस करना है, क्रेडिटर से भी रिड्यूस करना है. Then the next provision or the next adjustment is provision for the doubtful debt. So debtors के balance से sales return को deduct करना है. ये वाला set off को deduct करने के बाद 5% कैलकुलेट करना है. एक और फाइनल एडजस्टमेंट है. 20 minutes हो गया explaining this question. So see, it is that very difficult. When you are short on time, that's what happens. But it is okay. We can do it very easily. Now, all of you, please see, my dear students, the last adjustment है interest received का. Okay? Interest received का. अभी देखो, आप deposit में 25,000 रखा है, उसमें 5% interest. So 1,250 आएगा. Or you have also deposited at one place. Okay? So now coming back at other place, the investment that you have taken is for 1 lakh. Am I right? Is it for 1 lakh? 1,50,000. I'm sorry, ये है 1,50,000. उसमें interest आएगा 10%. So 15,000. So totally आपको interest मिलना है 16,250. Okay? Yes, deposits. Okay, I just wrote the words opposite. First is investment, the next is deposits. Clear everybody? इतना interest आपको मिलनी चाहिए. Okay? But ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 है. बट लेट अस लुक एट द फाइनल एडजस्टमेंट. ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. Let us look at the final adjustment. बहुत important है. Please see here. Interest received represents 1,000 rupees received from sundry debtors and the balance only on investment and deposits. इसका मतलब क्या है? कुछ लेट करने के वजह से आप उसको इंटरेस्ट चार्ज किया है. किसको? सन्ड्री डेटार्स को. The 7,250 सन्ड्री डेटार्स का इंटरेस्ट भी है. I have to remove that. Because ये balance ही interest on the deposits and investment इतना आया है. All of you understood? 7,250 total interest received, but in that 1,000 rupees received from the debtors. ये वाला you should not take it for the calculation. तो अभी कितना आया है?
The remaining interest on deposits received is 6,250. तो 16,250 रिसीव करने के प्लेस पे 6,250 रिसीव किया है. अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 16,250 माइनस 6,250, 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल है. ये जाएगा बैलेंस शीट पे, आपके करंट असेट पे और आपके पी एंड एल अकाउंट पे. क्रेडिट साइड पे कितना इंटरेस्ट लिखना है मैडम? Very simple. What is the interest that you should write? It is 16,250 for the deposits plus 1,000 rupees which you have received. So 7,250 आएगा. Okay? 17,250 आएगा, not 7,250. It is 17,250. Everybody clear? Any doubts in this? तो यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है. सी हियर ऑल्सो इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड में कुछ और इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है. दैट्स ऑल. There is nothing that you people need to get confused. Okay, so the first step is you will calculate how much interest is to be received. The next step you will be doing is what? उसमें से 16,250 से कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसके लिए डायरेक्टली यू कैन नॉट गो, बट 7,250 माइनस 1,000 इट विल कम टू 6,250. तो इतना ही आपने रिसीव किया है. ओनली 6,250 on deposits and investments you have received. So this 6,250 minus 16,250, 10,000 is your outstanding interest receivable. Clear? Outstanding interest receivable. Or you can do the simple way. P&L account में already interest received है 7,250. उसके साथ 10,000 outstanding को add कर दो. So 7,250 plus 10,000 gives you 17,250. Or you can do it like ये वाला इंटरेस्ट कितना आना है? इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स में 16,250 आपको आना है. सो दिस प्लस दी अदर इंटरेस्ट 1,000. उस टाइप करने से भी आपको 17,250 आएगा. 7,250 प्लस 10,000 करने से भी आपको 17,250 आएगा. Both are correct. Okay. Now I'll give a break for just 3 minutes, my dear students. And then we will start with the company accounts. I request everybody of you to go back and sit and practice this particular chapter, especially illustration number 7. Yeah. Yes, Sandeep, इस 1,000 का एक ही effect है, दो effect नहीं आएगा. Only the other, for this you will have two effects. That is right. So my dear student, illustration number 7, illustration number Hitesh, when depreciation is given in the trial balance, yes. That is the meaning. Okay, so illustration 7, illustration 12, illustration number 13, practice question number 1. Is 4 question ko if you are going to do Muhammad Shafi? Yes. Is 4 question ko if you are going to practice again and again and again, everything becomes easy. That's all. With this, we have completed the unit 1 of your chapter number 7. Okay, somebody, I think Aditya, no, Aditya, na? Akshat Jain asked me, what is that manufacturing? What is your exact doubt, Akshat, in that? Okay. What is your exact doubt? If you tell me the exact doubt only, I will be able to do. See, inventories question, if I have time, there will be, if they give me another class, I will definitely do. Okay. I have no other problem not to do or leave that and go. But the problem is with the time. Okay. Okay. Did everybody of you understand till here? Any doubts? If you want the landline number, I cannot help it. You should ask them. Cash with traders bank account, Shivansh. It is nothing but आपका कुछ traders bank account में cash है. It is nothing but bank account. Bank का नाम है traders bank. That's all. संदीप 1,000 का एक ही effect होगा. Yes, correct. Hi Prabhat. No participation today. Okay. Tulsinath, please go back and watch this. Apart from everybody, Mr. Sri Krishna has sent me 50 chats. Oh my God, he has sent me the highest number of chats. That means he is listening very, very attentively. Very good. Geeta ma'am, debtor आपसे value creditor amount लिया है हिसाब से, तो debtor में भी 20,000 डालना चाहिए. नहीं, debtor में भी you are subtracting 10,000 ना, so 10,000 ही दोनों बार subtract हो जाएगा. रिद्धि ओके, नेत्रा मैम ओके.
Shanmati, Netra, nice name. Dhruv, there is bad debts recovered. Yes, show it in the P&L account on the credit side. Shivam Vyas. Ma'am, illustration 13, will the closing stock come in the balance sheet? Yes, ma, it has to come because it's an adjustment. No. Okay, Naina Verma, you understood. I'm happy. Abhishek Prasad. Okay. Salaries credit में तो वो income है. नहीं, salaries credit नहीं है वो. They have written it on the right side. We can take separate columns. Ma'am, trading and P&L once again Samsa. You have to go back and do it. Okay. Akshat Jain, if I don't make balance sheet according to permanence, yeah, it is okay. Sequence, no, no, follow any one thing, Akshat, please, okay? Mohammed Siraj, okay, you have given me the answers, good. Shivangi, good, you were raising your hands, no, but now is it okay? Chaitanya Panath, I have explained it, okay? मैम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स को क्या होता है और क्यों बनाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज आप डेटार्स को एंकरेज करने के लिए थोड़ा जल्दी पे करने के लिए कुछ डिस्काउंट देते हो रवि कुमार ओके यू हैव गिवन मी द आंसर ऋतिक कुमार यू हैव गिवन मी द आंसर दिव्यांश कुमार सो मेनी कुमार्स Divyansh, ma'am, your expression that makes the spirit. What expression, what makes the spirit? I don't know, but you are listening to the class. I'm happy. Okay, clear, ma'am. Sai Pranavi, good. Jasnoor, very good. Jasnoor, how are you, Jasnoor, today? Hitesh Jasoni. Ma'am, do we need to do the entry for gross profit, net profit? Not required. Directly do the account and go. Akshat Jain. Ma'am, I didn't understand when to take bad debts in P&L and when not to take. My dear Akshat, whenever you have provision for doubtful debts, please take the bad debts in the account itself. Don't need to take once again into the P&L. Okay? When you should take into the P&L is if in the adjustments once again bad debts are coming, then only take it into the P&L. Yes, date not mentioned, full year. If date is mentioned, please be very clear. Tanmayi, okay, I have clarified your doubt. That's great. Mohammed Shafi, if sundry creditors less from credit 10,000 need to do whichever is less, you will be taking it. Okay. No problem, Prabhat. I understand. He tells me a very genuine doubt. Madam, when you are asking if I'm going to type, then I am not able to follow. I know because I take it at a very speed. I go at a very, I mean, a literal speed because that's very important for me. I want my students to learn maximum illustrations. Okay, these lectures are already available on your YouTube channel. So anytime you can go and see. So I want my students to learn the maximum. Purchases is included in furniture. Yes, Akshat. Akshat Jain, I have already cleared. Understood, understood. Very good. So I think I've clarified everything. Hitesh Jasoni. No, ma'am, if I asked if the closing entries are given, then you need to prepare the closing entries. Okay? Okay. Okay, good, Sri Krishna. I appreciate that you are participating and you are doing. Shivangi Nandi, if provision for doubtful debts is available in trial balance, then we take it to P&L account credit side. Is it correct? Why are you doing so much, ma? You just open the account. No, don't tell me the other things what is to be done. Okay, Shivangi, just take it to the account. No problem. You take it, prepare the account and the working notes, and then come back. Is that clear? Dhruv Soni. All doubts cleared. Perfect. I also want that only. So now you are confident with it? Okay. Chaitanya Krishna, your name is similar to Telugu region. How did you learn Hindi? Okay, good question. So I was born, brought up in Chennai. I am a Telugu, I know Tamil. Hindi was my second language in school. So I know Hindi also. But when they asked me to compulsorily teach in Hindi, so definitely I had to speak in Hindi because all the others are speaking in Hindi. No, otherwise my classes will be only in English from the first, okay? Okay, dear. So now coming back, Hitesh Jasoni, you have to wait. You are getting too much worked up. Shivangi Nandi. Okay, perfect. I think I've taken all your doubts. Okay. So now we will be going ahead with Akshat Jain. I know I've not covered that particular trading account that you asked me. Not trading account, manufacturing account of the unit 2. But I would request you, Akshat Jain, please go back once and sit and listen to the earlier class. Definitely you will be able to understand because you understand everything very easily, right? So definitely in that class I have already made you understand. So manufacturing account is something that you prepare to understand what is the cost of goods manufactured during the period. Okay, तो सभी
sabhi tarah ka cost will come inside that. So the point is, you people, the material cost will be there, labor cost will be there, and you also have the direct expenses and indirect expenses. All of them will come on to the debit side. Clear? So that you will show it on the debit side. On the credit side, you will have closing work in progress. And if you are going to sell any scrap, that will come on to the credit side. So we are now going to go ahead with chapter number 11. I thought I will have 1 hour time, but I only have half an hour's time. So I will be taking up some 10 to 15 minutes after the class. I want all of you to sit and listen patiently. Is that clear, everybody? Are we good to go, everybody? Yes, the system will adjust itself. Chapter number 11 is company accounts. So, till now, what we have done is the BRS we have done, that is for an individual, for a company. We have done BRS. The second one is inventories. We handled it for a company or any partnership firm or any individual, whoever deals with stock and inventories, you are going to do or look into that chapter. The third chapter that we have done is chapter number 7. Okay, the chapter number 7, which is nothing but Geeta is asking me to take class till 1:45. Nobody is going to sit till that time. I know. People who are very sincere and want me to take the class will sit. That's not an issue. But the thing is, anything feasible is will be 120 to 115 to 120. So don't worry. But I want all of you to be there because I'm going to handle each and everything is very important. You people have to give me your full attention. Clear? That we have done the chapter number 3. The next chapter we have handled is chapter number 7, manufacturing non-manufacturing entities ka final accounts. I know it is a bit worked up because you are studying a professional course. Adjustments will make you test, it will make you think, but you people have to solve a lot of questions. Then you will get a hold on the time as well as your presentation, which is very important from the exam point of view. A question can come for 10 to 12 marks from the chapter that I have done. Okay, shall I tell you what is the weightage of the chapters that I am handling? Chapter number 3, BRS can come between 5 to 10 marks. So take 10. So chapter number 4 also can come for 5 to 10 marks. Take a little bit, like say in between. Chapter 7 will come surely for 12 marks. Chapter number 11, the last question will come for 12 marks. I think 16 marks it will come. So this is the total percentage of portions that I am handling. How much it might come to? 15, 27, 27 plus thing is 43 marks. So whatever I'm handling out of your 100 marks, 40 to 45 percentage of whatever I have taught will come in the exam. If you are going to work out whatever I've done in the class and you're going to concentrate, definitely you can score 40% easily. Okay. So now, my dear students, I'm coming back to the chapter called as company accounts. तो अभी हम पढ़ेंगे इस chapter में 6 units है. Okay. In that first unit is just theory. I will be covering up in particular in one of the classes. तो थोड़ा बहुत, it's very small. Okay. So that I can cover it up. Now we are going to start with unit number 2, which is issue of shares for cash. तो इसमें से कंपलसरी 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा. बट समटाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो हैव अ मिक्स एंड मैच. आई टोल्ड यू 16 मार्क्स विल कम. तो एक वाला बड़ा क्वेश्चन कैन बी अ मिक्स ऑफ different units also. But till now we have seen a full-fledged question coming from shares, especially in this chapter. Then we have bonus shares, then we have rights issue. तो ये combine करके भी आ सकता है. Okay? But इस chapter में 16 marks compulsory it will come. But that will come as an option. Okay. If you want to omit this chapter, which I would suggest, don't do it. The most easiest chapter is only company accounts. The more you practice, the more you will understand. Is this clear? So now we are going to go ahead with the unit number 2. I want everybody to follow. अभी थोड़ा कुछ मैं थियोरी भी पढ़ाने के बाद, I mean whatever the concepts I will be teaching you, theory I will teach, with that I will also be doing the questions. Clear, everybody? Ready? So the first thing is we are going to see what is a company. Okay, a company is a artificial association, or it is a company, artificial body registered under the Companies Act. Okay, this is the normal technical definition. But my dear students, if you are going to be a sole proprietor, the amount of capital that you receive will be less, correct? Because I am the person, I am starting my business, whatever money I have, I'm going to invest. That is the meaning of a sole proprietorship. Point number 2.
Yo, I wanted more money, so I will be going. I have my friend who also thinks like me. Let both of us join together and then invest the money. That is called partnership. Your capital will be little more than your sole proprietor. Okay. But my dear students, as the business started growing, the need for money to run the business became increased. I wanted more and more money. Then the legal way or the form of association or the business organization structure evolved. It told that if you want more capital, you can introduce or incorporate a company. Is this clear? Company form of organization is a form wherein more money can be introduced, more money can be received because not 1%, 2%, it will have a lot of members. So the capital of the company is contributed by several members who subscribe or they pay money. They are called as the shareholders. Why? Because the entire capital, suppose say 10 lakh, is divided into smaller units called as shares. So the 10 lakh rupees, whatever I want, I can divide it. I can tell 1 lakh shares of rupees 100. I mean 10. 1 lakh shares into 10 gives me 10 lakh. That means I have with me pieces. 10 lakh rupees, not one person, but it can be 1 lakh persons subscribing for one share. Or it can be 100 people who can take it. Or it can be 1,000 people. It can be 10,000. So the money that I want is huge. So I want to distribute this. How will I distribute? I will break the capital and then distribute. So the money that is raised by the issue of shares, who will subscribe the shares, madam? Public will subscribe the shares. From where or why they will subscribe, madam? Because in the anticipation of whatever stock markets and whatever we are seeing today, if I'm going to put my money in a particular stock, I become the shareholder of that company. If the company is performing really well, I will get a return in the profit. So everybody today is interested to subscribe for the capital, and in this way it will work as a benefit for us. It will also work as a benefit for the companies, because companies at the end of the day need money to run the business. So the more and more they get money into the business, they will be able to do the business really well. You will also get returns really well. So shares means it is an instrument by which a company will raise money or it will get money from the public. Is this clear? तो शेयर कैपिटल का डेफिनेशन है शेयर इन द or share capital is nothing but raised by the issue of shares. What is raised? Money raised by the company by issue of shares. इसको हम बोलते हैं share capital. Clear everybody? The basic concept. Now we go into the next second concept. Share capital में different types of share capitals are there. 5 different types of share capitals are there. Good. What is the first one? Authorized. और इसको हम नॉमिनल भी बोलते हैं. ऑथराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल वो होता है जिसको हम मैक्सिमम इतना ही कैपिटल हम रेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई से 10 लाख रुपीज इज माई ऑथराइज शेयर कैपिटल. इसको हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? इसको हम मेंशन करते हैं कंपनी के लिए two documents are very important, the memorandum of association and articles of association. memorandum of association में capital clause एक होता है. उस capital clause में maximum amount of capital जो कुछ कंपनी को चाहिए उसको हम वहीं पे मेंशन कर देते हैं. तो ऐसा कुछ हम मेंशन करने से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स हो जाता है और उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड यानी नॉमिनल कैपिटल. सो लेट अस से 10 lakh rupees है इस कंपनी का ऑथराइज्ड. इट मीन्स दैट यू कैन नॉट गेट 1 rupee more than this particular value. But my dear students, in the general practice, if the company needs more money, हम articles of association AOA, MOA को बदल नहीं सकते. AOA को हम चेंज कर सकते हैं by passing the resolutions.
Is that clear? So through that we will do. But now you people have to understand that authorized or nominal capital वो होता है, वो maximum amount का capital को हम fix करते हैं ना, वो होता है authorized यानी nominal capital. The second capital is nothing but the issued capital. इस 10 लाख रुपीस को मैं यहाँ पे ब्रेक किया है ना, सो द सेम थिंग वी विल हैव. तो मैंने ब्रेक किया है ये 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच. ओके मैडम, ये वाला 10 क्या है मैडम? इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. द वैल्यू एट विच हम जब शेयर्स को खरीदते हैं कंपनी से, तो वो हमको शेयर सर्टिफिकेट देता है. उस शेयर सर्टिफिकेट में फेस वैल्यू, शेयर का जो वैल्यू बताते हैं शेयर सर्टिफिकेट में, वो वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू. जनरली इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू होता है ₹10. ओके, तो मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन किया है 10 लाख इस कंपनी का, उसको मैंने ब्रेक किया है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये वाला 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 होता है फेस वैल्यू. 1 लाख शेयर्स मेरे पास है. नाउ टू डिस्कस अबाउट इश्यूड कैपिटल. अभी मेरे मेरा रिक्वायरमेंट 1 लाख शेयर्स का ₹10 लाख नहीं चाहिए, तो इसमें मैं हाफ को इश्यू करती हूँ पब्लिक को. तो इसमें व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक द 50,000 शेयर्स at ₹10, so 5 lakh rupees becomes my issued capital. I have 1 lakh shares, that is okay, but I only want 50,000 shares to be issued, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है just 5 lakh. So why will I issue everything? पैसा मिलने से कुछ मेरा ऑब्लिगेशन पड़ जाएगा. सो आई विल नॉट टेक द मनी. कितना चाहिए उतना ही मैं इश्यू करती हूँ. तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मेन थिंग, आउट ऑफ विच हाउ मच यू इश्यू टू द पब्लिक. तो पब्लिक को कितना इश्यू करते हो, उसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल. नेक्स्ट, द थर्ड कॉन्सेप्ट और द थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, आपने इश्यू किया है 50,000 शेयर्स, इसमें पब्लिक ने परचेज किया है 40,000 शेयर्स. तो ये वाला 40,000 शेयर्स है, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. See, this is a case, madam. सभी समय always less than no. People can take all the 50,000 shares they can do, or they can just accept lesser than that, or sometimes they can also receive more than 50,000. That means what? If today Reliance comes outside and they issue shares, what, everybody will go and buy that. Correct? No. So उस टाइम पे उसका इश्यूड से भी ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, वो भी पॉसिबल है. बट आई विल टॉक अबाउट दोस 3 सिचुएशन सेपरेटली. बट फॉर नाउ आपको ये बात समझ में आना है कि इश्यूड कैपिटल को कितना पब्लिक सब्सक्राइब करके परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इज दिस क्लियर एवरीबडी? ये होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और नेक्स्ट आता है इश्यूड हो गया पेड अप कैपिटल. तो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द शेयर्स. तो 1 लाख शेयर्स में 50,000 इश्यू किया है, 50,000 में 40,000 वो सब्सक्राइब किया है. अभी पेड अप कैपिटल हम बात करते हैं ₹10 फेस वैल्यू के टाइप से. आई मीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फेस वैल्यू वी आर गोइंग टू टॉक. अभी ये ₹10 भी माय डियर स्टूडेंट्स, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, उस बॉडी ने बताया है कि एवरी कंपनी को ₹10 और वॉट एवर द फेस वैल्यू दैट इट हैज, उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहिए. इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को वो समझ के ये रूल को रखा है कि ये वाला फेस वैल्यू जो होता है, वॉट एवर द फेस वैल्यू द कंपनी इज गोइंग टू इश्यू, शुड नॉट बी कलेक्टेड एट वन इंस्टॉलमेंट. रादर इट हैज टू बी ब्रोकन minimum into 2 installment, maximum into any number of installments. So the first installment is called as the application money. उसको हम क्या बोलते हैं? application money. क्यों मैडम application money बोलते हैं? I will tell you. The second one is called as the allotment money and the next will be called as calls. तो थोड़ा companies just application allotment से 5 rupees जैसा करके they can split it and they can take it, or some companies can further go to calls, first call, second call, final call, इतना सारा कुछ calls भी वो बना सकते हैं. But the rule is SEBI said
10 rupees not in one installment, minimum 2 installments. So application allotment you can have any number of installments after that. तो ये बात कंपनी को डिसाइड करनी चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो एक ही बार कलेक्ट करेंगे, नो एक ही बार कलेक्ट करने ही चाहते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करेंगे, यानी मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट्स कंपनी फिक्स करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज पेड अप कैपिटल मैडम? सब्सक्राइब करने के बाद, ओके, सब्सक्राइब करने के बाद जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उससे पैसा मांगते हैं, उससे पैसा मांग के कंपनी लेटर्स बेचते हैं। सो इट विल टेल माय डियर मिस्टर ए, यू आर होल्डिंग 100 ऑफ माई पर्टिकुलर कंपनी शेयर्स, अभी टाइम आ गया है अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज देने का, तो 100 इंटू 2 रुपीज 200 रुपीज आपको देना है। सो दिस इज पेड अप कैपिटल। Okay, the paid up capital comes at the end. So first is the called up capital. Called up capital is nothing but अभी कंपनी ने जो लेटर्स लिखा है और मनी को पूछ रहा है वो हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो मिस्टर ए से वो 200 रुपीज है ना, वो है कॉल्ड अप कैपिटल। और फिर the last type of capital, the last type of capital is nothing but the paid up capital. मिस्टर ये के पास जस्ट 100 रुपीज है, वो 200 पे करना है बट 100 रुपीज ही पे किया है, द रिमाइनिंग विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर्स। तो पेड अप कैपिटल जो होता है वो कितना हम शेयर होल्डर हमको पैसा देता है वो है पेड अप कैपिटल। इज दिस क्लियर? फर्स्ट आता है ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम नॉमिनल, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल और द अमाउंट दैट द कंपनी कैन रेज। उसमें यू कैन गिव द एंटायर, यू कैन इश्यू और यू कैन इश्यू अ पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यू करने के बाद पब्लिक जो सब्सक्राइब करके उसको परचेज करते हैं वो हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्रिप्शन होने के बाद, okay, that I'm coming, Shivam Vyas, I will tell you all the conditions one by one, one by one, one by one. Okay, now first let us learn it in a step bus. After the shares are being purchased, when you call, I told you face value will be divided into more than one installment. So when you call the amount, it is called as called up capital. How much capital or how much money the shareholders pay will be called as the paid up capital. If paid up capital is less than the called up capital, the difference is your calls in arrears. मैंने call किया है 200 rupees, उसने pay किया है 100 rupees, so remaining 100 rupees is nothing but your calls in arrears. Is this clear? और एक और बात आपको थियोरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? तो ऑल द टाइप्स ऑफ कैपिटल आई अंडरस्टूड, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये वाला रिजर्व कैपिटल क्या है मैडम? आप बाइक चलाने के टाइम पे रिजर्व मोड में रख देते हो, लाइक देयर यूज्ड टू बी अ रिजर्व मोड। इसका मतलब है पेट्रोल खत्म हो रहा है इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। ओके, सो कमिंग बैक, यस यू हैव टू पे। राजा शर्मा प्लीज वेट, रिजर्व में रख देते हैं तो ये क्या है? ये होता है वार्निंग साइन के तरह। द सेम वे रिजर्व कैपिटल कंपनी अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में होता है दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज अनकॉल्ड। आउट ऑफ द 1 लाख शेयर्स, सपोज 10,000 शेयर्स को मैं साइड में रख देती हूँ। कब? व्हेन विल आई कॉल दिस पर्टिकुलर शेयर्स? तब मैं कंपनी को वाइंड अप करती हूँ। व्हेन आई एम वाइंडिंग अप द कंपनी, कुछ एक्सपेंसेस हो जाता है, उस टाइम पे इफ आई विल इश्यू दिस कैपिटल, तो रिजर्व कैपिटल, करेक्ट तनीषा, रिजर्व कैपिटल वो होता है जो मैं फ्यूचर में कॉल करती हूँ, अभी उसको कहीं पे मैं इश्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि व्हेन आई एम गोइंग टू क्लोज द बिजनेस, ऑफ कोर्स आई विल हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट्स और एक्सपेंसेस, तो उसको मैं मीट करने के लिए इस कैपिटल को वैसे ही मैं छोड़ के अनकॉल्ड कैपिटल में रख देती हूँ। इसको बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं, तो इसके ऑपोजिट होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बिकॉज द नेम्स आर सिमिलर, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व दोनों सिमिलर से ही है, but my dear students, yes Tulasinath, you're right. So my dear students, capital reserve is a reserve created out of capital profits. Capital profits का मीनिंग क्या है? जब आप कैपिटल असेट्स को बेचते हो, इफ यू रिसीव अमाउंट और प्रॉफिट फ्रॉम दैट, वो वन टाइम होता है, तो इस दैट इज व्हाई यू कॉल दैट एज अ कैपिटल प्रॉफिट। उसको हम लेके जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। और
This will be shown in the balance sheet under the reserves and surplus. Where will it be shown in the balance sheet? It will be shown in the balance sheet under the reserves and surplus. Is this clear, my dear students? That's all. With this, we finish off the types of share capital. First and foremost and most important thing, types of share capital. Now, the next one, we go ahead with the process of issue. Okay. मैडम 10,000 शेयर्स कंपनी ने दिया है, इश्यू किया है अभी 10 रुपीज, और इस 10 रुपीज को मैं 3232 करके, so this is application, this is allotment, this is first call, this is second call. सब समय whenever I'm doing a company's account, ओके, कैपिटल रिजर्व का मीनिंग है जो हम कैपिटल प्रॉफिट्स को कंपनी और पर्टिकुलर बिजनेस में व्हेन वी रिसीव कैपिटल प्रॉफिट्स, उसको हम इस रिजर्व में लेके जाते हैं. कैपिटल प्रॉफिट्स जो होता है वो कैपिटल असेट्स को बेचने के टाइम पे हमको जो प्रॉफिट्स मिलता है वो होता है कैपिटल प्रॉफिट्स, और वो जाता है कैपिटल रिजर्व पे. My dear students, whenever I am doing a company's accounts problems, like after I start doing, you will understand. This format is how I am going to write. So everything I will mention it here itself. So it becomes very important for you people. If you start practicing in this format, easy may you can do the questions. Now, my dear students, how does the process work? Before going into the process, my dear students, I would like to ask you, what is the entry passed? आप शेयर्स को इश्यू करके पैसा लेने से what is the entry that you pass? एक सिंगल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट, बिकॉज आपको मनी पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट पे, कंपनी के बैंक अकाउंट पे पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट एसेट है. व्हेन यू रिसीव मनी यू विल डेबिट द बैंक अकाउंट एंड देन यू विल बी क्रेडिटिंग शेयर कैपिटल. Why, madam, share capital? पैसा कहाँ से आ रहा है? When I'm issuing shares, I'm able to get money, correct? When I issue shares and get money, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं. और शेयर कैपिटल होता है आपका लायबिलिटी. मैडम, क्या मैडम पैसा आ रहा है? Then you are telling it is a liability. Yes, पैसा आपका है? नहीं, इन्वेस्टर्स का पैसा आपके पास है, तो वो है लायबिलिटी. आप कंपनी को क्लोज करने के टाइम पे वापस देना पड़ेगा, तो टिल द टाइम आप शो करेंगे शेयर कैपिटल के अकाउंट पे. तो ये है सिंगल एंट्री. आप जब शेयर्स को इश्यू करके यू गेट द मनी, देयर इज ओनली वन सिंगल एंट्री विच इज बैंक टू शेयर कैपिटल. बट because we split the face value into the installments, ये एक एंट्री हमको 8 एंट्रीज बन जाएगा. One entry becomes 8 entries because for each and every installment 2 entries आपको पास करनी चाहिए. I will do and show that, then you will understand. Very easy. Okay. But before that, let me tell you what is the process by which you will purchase the shares of a company. आपने सभी, I mean, like any one of you have applied for magazines? Have you seen the concept of magazines apply? Like when you read Chandamama or you read the Infinite Thoughts, there are a lot of books. Of course, they're not in production right now. But technically, when you read all these books, what happened? They will give you a particular subscription. There is a proper leaflet. So first you will write your name or something. And then they will say, if you want a monthly subscription, pay so much amount, correct? So you will cut that paper clipping and then fill your details, and then you will keep the money and you will post it, or you will courier it to them, or you will do a money order to them, right? The same way only happens even with the shares also. The company gives an advertisement in the newspaper. So when it comes in the newspaper, what will happen? A person who's reading newspaper will come across the advertisement. Then he'll see, okay, there is a company, ABC company, which is issuing shares. Chalo, let me also subscribe for the shares. So what he will do? Yeah, technically it is an IPO, right? So what will you do? The IPO is going to come. That's initial public offer. The IPO is going to come. So what I am going to do? I am going to subscribe. I have so much money. Let me invest it. So the first thing is, whatever is the application money, तो इसको इस इंस्टॉलमेंट को क्यों एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट व्हेन द शेयर होल्डर और द पर्सन अप्लाइज फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी इनटू व्हाट एवर नंबर ऑफ शेयर्स ही इज टेकिंग. तो फर्स्ट कहां से आएगा एक्शन? द एक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द कंपनी. तो इन्वेस्टर लिखेगा और बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर देगा थ्रू हिज पर्टिकुलर डीमैट accounts. He's going to purchase and transfer the money.
Clear everybody? तो अभी क्या होगा? After the company receives the money, it will understand, okay, Mr. A has subscribed for so much, इतना पैसा उसने दे दिया. Okay, तो ये वाला अभी मैं allot कर देती हूँ. So the company thinks I will allot the particular money right now because I need the money. He has given me money, so I will give him the share certificate. तो जब उसको allotment हो जाता है, वो है second step, company के हिसाब से he gets allotted. Is it clear? Then the next installment, तब shareholder बनने के बाद the next installment हम जब उसको पूछते हैं, उसको हम बोलते हैं allotment money. Allotment होने के बाद हम money पूछ रहे हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया है allotment. उसके बाद सारा कुछ कॉल्स ही बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ये तो कंपनी का डिसीजन है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन का कैसे हम दो एंट्रीज लिखते हैं, इस एंट्रीज को हम स्प्लिट करते हैं. फर्स्ट, एप्लीकेशन पे टाइम से फर्स्ट शेयर होल्डर हमको पैसा देता है, तो क्या है, व्हाट एंट्री विल आई राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. I am getting money, but from where I am getting? From application. So share application. My dear students, don't write short forms. Don't write SAB. No, write bank share application. Okay. Being amount received on application. Clear everybody? Being amount received on application. But my dear students, ये वाला 3 rupees ultimately belongs to the 10 rupees. तो हम अभी transfer कर देनी चाहिए. That is share application account debit to share capital. Amount transferred to the share capital. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, क्योंकि हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो वी विल बी डूइंग दैट. यस, सो वी विल बी टॉकिंग दिस एज ट्रांसफर एंट्री एज, एंड इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंट्री. फर्स्ट इन एप्लीकेशन अलोन रिसिप्ट एंट्री पहला आएगा और ट्रांसफर एंट्री सेकंड आएगा. Narrations are mandatory for every journal entries, Tanisha. You have to write the journal entries. Narration for the journal entries. So when I come to allotment, my dear students, यहाँ पे थोड़ा difference आएगा. Allotment में you already know who the person is. Okay? What is the nature of these accounts? The bank account is an asset, share capital account is a liability. The in-between accounts will get closed. They are temporary accounts. Okay? So now coming back, the second one. After the company receives the money, I told you it will allot. Once वो allot करने के बाद, जब आप उस कंपनी का शेयर होल्डर तब बनते हो, तब वो अलॉट करने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, शेयर होल्डर्स बनने के बाद, कंपनी फर्स्ट मनी रिसीव करने के पहले ही ट्रांसफर एंट्री कर देती है. दैट इज नथिंग बट the second one. First will be the transfer entry because the company trusts you. The company thinks, okay, this person is my shareholder. Where will he go? He will pay me money. He's a good person. So first let me transfer the money. So being the transfer entry passed or made, और फिर जब वो ट्रांसफर करने के बाद इट विल कॉल और इट विल आस्क फॉर मनी, तब हम मनी पे करते हैं उस टाइम पे, और वो एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. क्लियर? तो बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड, कॉल होने से कॉल्स के लिए भी ऐसा फर्स्ट ट्रांसफर एंट्री आता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ट्रांसफर एंट्री I pass first and then I pass the receipt entry. Bank account debit to share first call. Please write the narrations. If I miss to write here also, you people remember and write. Very important narrations. Okay?
allotment money due, allotment money received, that also you can write. Hitesh, please don't by heart what is given to you in the textbook. Understand the concept and ask. Is that clear? So coming back, these are the entries. This is first call. If you have second call, same two entries will get repeated. So that is why I told you minimum of 4 installments will be there, and all the 4 installments you are going to pass two entries. Is this clear, everybody? This is the process of issue. These are the entries. Now we are going to talk about the next concept, which is called as the subscription. I told you, जब हम issue करते हैं shares, the public will buy the shares. उसको हम बोलते हैं subscribe. जब हम magazines को subscribe करते हैं, उसका meaning है हम उसका monthly subscription यानी yearly subscription को pay करके purchase कर लेते हैं. The same ways for shares also. So my dear students, I will tell you 3 cases. Case 1, issued 50,000 shares and received 50,000 shares. तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. क्लियर एवरीबॉडी? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. तो मैडम कंपनी ने इश्यू किया है 50,000 और कंपनी को सब्सक्रिप्शन और यानी रेस्पॉन्स मिला है 50,000 का. तो इट्स ओके, आराम से, वेरी गुड. इसको हम और इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. सो देन वी विल बी No, Raja Sharma, you have to do it like this only. Then it will be a normal subscription. हम अभी आते हैं सेकेंड को. 50,000 इश्यू किया है, कंपनी रिसीव किया है 40,000. इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. मैडम issued is equal to subscribe, normal subscription. Yes. So, madam, what is this, madam? Whenever the issued capital is more, but subscribed capital is less, issued 50,000 I issued, but they have subscribed for a lesser value. तो इस केस को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. मैडम इस केस में what will happen, madam? Can we go ahead? My dear students, in cases like this, you people have to check for a condition of minimum subscription. ये वाला क्या है मैडम? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बात ये है कि एटलीस्ट 90% of the shares to be subscribed. यहाँ भी SEBI has given or it has written this particular value, my dear students. What it has told is, my dear companies, if you don't receive minimum 90%, at least 90% of the issued capital, please don't go ahead with the allotment. You should return back the money to the people within 30 days. That's all. Why? Because SEBI wants to ensure कि आपको जो पैसा चाहिए उसमें 90% मिलने से ही आप कर सकते हो. Yes. So that 90% is of the issued capital. Okay. So coming back here, I have issued 50,000 shares into 90%. कितना shares मिलना चाहिए? At least 45,000 shares I should have received or they should have subscribed this 45,000 shares. Otherwise, it is a futile exercise. तो मैडम इस तरह के क्वेश्चंस पे सपोज 40,000 ही मिला है, then what you should do? You should give a note. Since it does not meet the 90% criteria, minimum subscription नहीं मिला है कंपनी को, तो हम इससे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं. We cannot go ahead. हम नहीं प्रोसीड कर सकते हैं. This is the note that you should give. ओके तब 90% मिला है, 45,000 शेयर्स आ गया है. अभी हम क्या करना है? आप क्वेश्चन से प्रोसीड कर सकते हो, बट व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स आप लेते हो? 45,000 शेयर्स को लेके ही आप इस सब क्वेश्चन, इस सब एंट्रीज को फिल करते हो. नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पे कितना है उतना मिला है, सो यू विल टेक 50,000 शेयर्स एंड प्रोसीड विद द क्वेश्चन. नाउ व्हेन यू कम टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, whatever 90% is meeting, no, if the 90% is met, then the lesser number of shares को लेके आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. And the third type of issue is more than. मैंने बताया है रिलायंस का शेयर्स को सभी लेते हैं. They will go ahead and they will purchase them. So what will happen if they go ahead and purchase them? Everybody go ahead and purchase them. It will be like this.
दिस विल बी ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? जब इश्यूड 50,000 है बट रिसीव्ड मोर है. सो इश्यूड लेस है, सब्सक्राइब कैपिटल मोर है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम. मैडम ऐसा आने से व्हाट विल आई डू मैडम? इज एक्सेस शेयर्स वॉट एवर 10,000 शेयर्स को आप इधर फुल्ली रिजेक्ट कर सकते हो. यू कैन टेल नो, एक्सेस 10,000 शेयर्स का मेरे पास प्लेस नहीं है, ओनली 50,000 शेयर्स इज माई अलॉटमेंट वैल्यू, आई विल रिजेक्ट. यानी आप एक्सेप्ट करके प्रोरेटा अलॉटमेंट कर सकते हो. प्रोरेटा अलॉटमेंट का मीनिंग आई विल टेल यू. और यू कैन पार्शियली एक्सेप्ट एंड पार्शियली रिजेक्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा? प्रोरेटा का मीनिंग है एडवांस मनी लेना. दैट्स ऑल. दैट इजी इट इज. एडवांस मनी लेने का मीनिंग, आई गेव यू अ शॉपकीपर्स एग्जांपल. नो, you go to a shop on the day number 1. After you go to the shop, what happens? You give him a particular value 100 rupees, but you purchased only for 50 rupees. So how much your money is there with him already? 50 rupees is there. He says, madam change nahi hai. So I say, okay, you keep it, I will come later date and then I will do, I will purchase again, then we can adjust. सेम कॉन्सेप्ट. वो 10,000 शेयर्स का मनी जो मिला है कंपनी को, वो रिजेक्ट वापस करने के बिना इट विल हैव इट विथ इटसेल्फ. तो तब हम अलॉटमेंट के मनी को पूछते हैं उससे. फर्स्ट इस मनी को एडजस्ट करने के बाद जो बाकी है उसको हम लेते हैं. ये कॉन्सेप्ट है एडवांस मनी के तरह. दैट मीन्स वेरी वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स. हम जो पैसे एक्सेस में रिसीव करते हैं कंपनी, उसको रिजेक्ट करने के बिना वो एक्सेप्ट कर देता है. एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है? 50,000 शेयर्स को 60,000 कर देगा? नो, इट इज स्टिल 50,000 ओनली. बट क्या है, वो एक्सेस मनी जो मिला है उसका मनी हम हमारे पास रख के फ्यूचर मनीज व्हेन वी आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द पीपल, उस समय पे इसको डिडक्ट करने के बाद ही, इसको डिडक्ट करने के बाद ही वी विल टेक द रिमाइनिंग मनी. इज दैट क्लियर? सो पार्शियली रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्शियली एक्सेप्ट कर सकते हैं मैडम. ओके, we can adjust with the allotment and with the calls also. You don't worry, when I do the question I will show you how I'm going to adjust. Okay, now please understand that in an oversubscription problem these three cases are possible. Madam iska accounting entry mein kya effect hai? What? Iska accounting entry mein hum kaise show karte hain? Whenever you have a normal subscription or minimum subscription, नो इफेक्ट. एंट्रीज में कुछ चेंज नहीं है, सेम एंट्रीज है. नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 50,000 लेते हैं, इसमें 45,000 लेके आप इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं. बट व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इन द क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री को हम सीबीए एंट्री बना देते हैं. What will happen? CBA एंट्री. CBA एंट्री का मतलब क्या है मैडम? इसके साथ हम बोलते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. क्यों मैम? ये वाला सीबीए बोलते हैं, शेयर कैपिटल में सी, ये वाला बी, अलॉटमेंट का ए. दैट मीन्स शेयर कैपिटल फेस वैल्यू के अमाउंट लेते हो, बैंक जो आप रिजेक्ट करते हो उस अमाउंट यहाँ पे आते हो, और किस अमाउंट को आप एडजस्ट करके यानी एक्सेप्ट करके प्रोरेटा में लिखते हो, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा. आई विल शो यू अ क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू वरी. हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैं एक क्वेश्चन I will be showing it to you. Is this clear everybody? Yes, you would have done it in your 12th standard and I hope you did not skip that chapter that time. Many people would have skipped. That is the problem I will be facing. If you have not skipped, then I will be the happiest person. Everybody, now we are going to see an oversubscription problem. And now issue of shares. The oversubscription problem is illustration number 3, I guess. No, illustration number 4. I'm going to share the screen and now we are going to do the question. Yes, everybody? Okay, good. I'm just seeing your doubts, whatever you people have messaged till now.
Okay. Okay, right. I'll take your doubts a little later. If I'm going to see time waste. I mean, not time waste. For completing the portions, there will be a lag. Okay. So coming back, yeah. Month limited invited applications for 50,000 equity shares at rupees 50 each, which are payable on application 20, on allotment rupees 10, first and final call 20. The company received applications for 60,000 shares. So ये होता है over subscription problem. The company directors accepted applications for 50,000 and rejected the rest. Okay, Abhi dekho, all of you, what am I going to do? Whenever I'm going to write a question, I told you, first thing is I will be writing it in this presentation. Clear, everybody? So, illustration number 4, Panth Limited. So, in the books of Panth Limited, it will be the journal entries. Okay, इसका presentation है. आप journal entries कैसे पास करते हो उसका ही presentation आएगा. यहाँ particulars आएगा और debit or credit date आएगा. If date is given to you in the question, write date column also. Okay, 50,000 shares at rupees 50. इसको हम divide किया है 20, 10, 20 से लेके. We have taken and we have divided it under 20, 10, 20. Clear? So this is application, this is allotment, and this is the call. Abhi, we have received 60,000 shares, correct? So they have accepted only 50,000. इसका मतलब है वो 10,000 shares पूरा का पूरा reject हो चुका है. What has happened? They have rejected everything. The remaining is being rejected. Very good. So madam, the first entry, what will be the amount? अभी यहाँ पे 50 rupees आ गया है. ये वाला, it is all correct. Now the first entry, all of you please see. तभी whenever we have an over subscription question, हमको जो share subscribe करते हैं that into the application money. So 60,000 into 20, 1,20,000, 1,20,000. क्यों मैडम? Because first application का process है, हमको पैसा आता है. We don't know if it is over subscription, under subscription, normal से कुछ भी नहीं मालूम है. Just we receive the money. So in this example or in this illustration, हमको पता है 60,000 shares का लोगों ने हमको money भेजा है. So it will be 60,000 into 2. अभी यहाँ पे आओ, शेयर एप्लीकेशन का मनी इस एंट्री से हम लेके 1,20,000 हम लिखते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के स्ट्रेट हाँ 12 lakhs. This is 12 lakh rupees. Okay, so now share capital के straight always the face value कितना है? 20 है एप्लीकेशन का. और कितना शेयर्स हमने इश्यू किया है? जस्ट 50,000 shares. Yeah, I corrected my mistake. अभी देखो everybody, you keep correcting my mistake, you will forget here. So 50,000 into 20. तो 10 lakh rupees आएगा शेयर कैपिटल के straight. कितना आएगा? 10 lakh rupees. और फिर कितना मैंने रिजेक्ट किया है बैंक में? This into 20. तो 2 लाख रुपीस रिजेक्ट किया है. कुछ एडजस्ट किया है क्वेश्चन पे? नहीं. तो ये हो जाएगा 0. यहां आप लिखोगे बीइंग द ट्रांसफर एंट्री पास्ड. क्लियर? बीइंग द ट्रांसफर एंट्री पास्ट. अभी यहाँ पे देखो व्हाट इज दैट यू विल बी राइटिंग. ये 60,000 फर्स्ट एंट्री पास करने के बाद इसको डिलीट कर दो क्वेश्चन पे. अभी 50,000 के साथ में करो क्वेश्चन. शेयर अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 10 है 5 लाख रुपीस. 5 लाख रुपीस. और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट भी फुल पैसा आ गया 5 लाख और 5 लाख. क्लियर एवरीबॉडी? और शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 50,000 इंटू 20, 10 lakh and 10 lakh. यहाँ पे मिल गया 10 lakh and 10 lakh. That's all. These are the entries. Please write full zeros में लिखो. Don't write LL because I am writing L. You people need not write L. Is this clear, everybody? So this is a case of a over subscription. Do you have any doubts with this over subscription का?
क्या हुआ है यहाँ पे? इट इज जस्ट दे हैव रिजेक्टेड द थिंग, सो रिजेक्शन में बैंक में आएगा कितना रिजेक्टेड है. इज दिस क्लियर? Now let us look at two more illustrations before we close today's class. Next class I will complete this chapter. Okay. So now coming back, illustration number 3, let us see. अंडर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है ये वाला. देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑन 1st of April ए लिमिटेड इश्यूड 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल ऑन 20, 30, 25, 25. डेट्स भी दिया है. ऑन 20 में 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड ऑल द एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड. तो 43,000 में 90% यू शुड चेक, बिकॉज ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन. तो अभी 43,000 इंटू 90% कितना आएगा? 43,000 इंटू 90% कितना आएगा? वेयर इज दिस? 43,000 इंटू 90% हमको आएगा 39,700. No, 38,700, correct? So it is 38,700, but you received applications for 40,000. तो ये वाला 90% से ज्यादा है. So you can do the question. तो my dear students, how will you do the question? अब यहाँ here it will change like this. I will show you here how to write it. इस question में 40,000 shares at 100 rupees, 20, 30, 25, 25. डेट्स दिया है, सो डेट्स भी लिख के यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. जस्ट पास द एंट्रीज. फर्स्ट 40,000 इंटू 20 विल गिव यू 8 लाख. सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. ये वाला दो एंट्री नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट एन ओवर सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम. ये पास करने के बाद यहाँ पे आ जाओ. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 30 वो है 12 lakhs. देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वो हो गया है, ये वाला है फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल 40 इंटू 25 इज 10 लाख. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल है 10 lakhs और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल है 10 lakhs. और फिर फाइनल कॉल और द सेकेंड कॉल के लिए ऐसा ही यू हैव टू पास द एंट्रीज. सिंपल एज दैट. आई वांट यू पीपल टू ट्राई द इलस्ट्रेशन नंबर 3. नाउ प्लीज सी, मैम ये पहला मेंशन तो नहीं करना है अंडर. Yes, they will give it to you, ma. So you can do it based on that, okay? They will do it. They will give it to you already, Riddhi. So you will be doing. Okay, Riddhi, like the chapter it seems. Okay, ma'am, the subscribed capital must be 90% of the capital. Aha. Minimum 90% is the criteria. Shivam Vyas, 90% minimum. If you receive more than that, that is okay. So you will put this as the yardstick. If you don't receive 90%, you cannot do that. Okay, you cannot go ahead and you cannot do that particular question. That you should give it as the point. अंडर यानी ओवर आप कुछ मेंशन नहीं करते हो. यू जस्ट राइट हियर इन द प्रेजेंटेशन अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है लिखने से ओके, दैट इज गुड. बट यू नीड नॉट टेक्निकली राइट. यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन एज इट इज. इज दैट ओके? Okay, then Tulsi Nath. Okay, good. You're sitting and typing everything, Tulsi Nath, taking from GChat and then putting it here. What is that you're doing? Please listen. Incomplete records I am not handling. I think the other person, Sanket, will be handling. In working, you have to show. Yes, that's a good question. Madam, in working, should we have to show? Yes, you need to show that particular thing. Okay. Saubhagya Mantri. Yeah, okay, ma. It is 12 lakhs, not 1.2. Without knowing, I have put it. Okay. Okay, good. My dear students, we are going to do only one more. I'll show you that one illustration, which is a normal illustration, which is a normal subscription ka question. All of you, please see here, normal subscription ka question. Here, full subscription. A company invited applications for 10,000 shares at rupees 50 each payable on 15, 20 and 15. Applications are received for 10. So 10,000 shares I've issued, 10,000 shares I've applied for, and this is a normal question. So what is this? This is a normal question. You can try the illustration number 2 and illustration number 3. So the next topic or the next class we will be meeting on Friday. Easy 16 marks. After I finish all the units, you should tell Raja Sharma, okay?
It will not be this easy. When I start doing the complications, when I start teaching you the concepts and everything, no, it will seem a little difficult, but you people should try working before. After the journal entries, you can do, Preeti. Is that clear? Thank you for patiently listening. I think, Savan, we can end the session. Yes. Thank you. No, my name is not there. Incomplete, I am not taking. Okay, bye.